Good evening, students. Rahatullah Ansari, good evening. I hope you're all doing well. Jim Jones, good evening. Yes, Muhammad Asif, good evening. Give me the clearance. Anjali Sahu, Shifu Qadir, very good evening. Give me the clearance, audibility and visibility clearance, please. Neeraj Singh, Prashant Prabhakar, all good, very good. Chaliye, very good. I hope you're all doing excellently well. Zaifa Sheikh, Walaikum Assalam. Namaskar. Everything is fine, excellent. I hope your preparation is also doing very well. You are doing great. Preparation काफ़ी अच्छा चल रहा है आपका. आपका last session है for your Maha revision. The algorithms, Maha revision, welcome to PW platform. Series of Maha revision. I hope all the subjects are over except for my course on algorithms. So we will try our level best to cover up. No, there is no need of nervousness, Shifu Khadir. No, not whole night session. I don't believe in whole night session. I believe in, I don't want to waste your time as such, right? So I would, because the course is algorithm course है, so we look for optimal strategy. अगर मैं optimal strategy apply ना करूँगा तो then it is meaningless, right? I would not want to be in greedy approach, but rather believe in divide and conquer, and with dynamic programming we will try to cover up all important aspects from your examination perspective, assuming as if this is your last round of revision for algorithms, right? We'll see Anjali Sahu, how much time we will see. We don't bother about time. Content is more important than time. ठीक है ना? Content is more important than time. That is what we would say. Yes. We'll try our level best to justify to the maximum possible extent. Operating system revision is over. Prince Independent Boy. Operating system revision का हो गया course. देखिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए आप गेट वाला प्लेटफॉर्म पर, इट इज देयर. ओके, सो आई बिलीव इन बेसिकली लाइक ऑप्टिमल पॉसिबल स्ट्रैटेजी फॉर डूइंग रिवीजन विथ मैक्सिमम पॉसिबल कंटेंट. ठीक है, वर्स्ट पॉसिबल प्रिपरेशन सो दैट इन द एग्जाम यू आर इन द बेस्ट केस. चलिए स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक. तो फर्स्ट टॉपिक वुड बी ऑन असिम्प्टोटिक एनालिसिस. ठीक है, so just to warm up, we will go through what is algorithm, okay? And then the life cycle steps. Here, first part is analysis part, second part is design strategy. तो हम पहले analysis पर focus करेंगे, फिर बाद में design strategies पर आएंगे. ठीक है? So some people call the name of the course as algorithm, and some people even call it as DAA, design and analysis of algorithms. I believe in many of the universities they ऐसा बोलते हैं design and analysis of algorithms. So you call either algorithms or basically design and analysis of algorithm, both are correct. ठीक है? So there are two parts here. One is the design and the other is analysis. तो पहले हम analysis पढ़ेंगे, ये मान करके आपको concept है algorithm का, फिर बाद में हम design strategies पर focus करेंगे. तो हमारा जो discussion होगा, this will be the framework. In the first arena, we will talk about the analysis part, like focusing on algorithm concept and life cycle steps, methodologies of analysis, types of analysis, major part asymptotic notation, framework for analyzing recursive and non-recursive algorithms, right? Space complexity, loop complexities, etc. So, अगर आप जो हम discussion यहाँ पर करने वाले हैं along with typical problem solving भी होगी, along with typical problems, अगर आप को concentrate कर सुनेंगे, तो आई एम वेरी श्योर इसके बाद आपको, चूंकि यू हैव ओनली 5 to 6 days मोर, इसके बाद शायद आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत ना हो. आप ये जो PDF मैंने प्रिपेयर की है, राइट, और गॉट इट प्रिपेयर्ड रादर, आप उसको जस्ट लाइक ए क्विक रिविजन बिफोर दैट यू कैन एक बार देख सकते हो. दैट शुड बी सफिशिएंट इनफ. फिर से आपको कोई और सेपरेट रिविजन करने की ज़रूरत ना हो. यस, रौनक कुमार, गुड इवनिंग. आई होप यू आर डूइंग वेल. एंड हिमांशु ऑल्सो, वेरी गुड इवनिंग.
डिजाइन स्ट्रैटेजी जैसे आपको पता है 3 डिजाइन स्ट्रैटेजीज है। फिर उसके बाद सम मिसलेनियस टॉपिक्स है, ग्राफ एल्गोरिथम्स, हीप एल्गोरिथम्स, हैशिंग आई बिलीव हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन डेटा स्ट्रक्चर कोर्स, सेट्स एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, सेट इज ऑफ कोर्स नॉट नीडेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एल्गोरिथम्स। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था क्रैश कोर्स में, इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू हियर आल्सो आई विल टॉक अबाउट ये सेट्स के टॉपिक से आपको क्या पढ़ना है फ्रॉम एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव, ये हम देखेंगे। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की भी केस स्टडी हम देखेंगे यहाँ पर। चलिए, so very quickly we'll just go through the definition of algorithm. Consists of finite number of steps to solve any problem. Every step involve fundamental operations. ये तो आपको पता है। Every operation must be definite and effective. ये 2 important properties है algorithm के। Definiteness का मतलब ये है कि that step जो operation है आप वो finite amount of time में complete करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई operation take infinite time, वरना क्या होगा, that operation which is going to take, which is not definite rather. Yes, Tushar Sisodia, good evening, I hope you are doing well. And all other people whom I have not told by name, very good evening and welcome to PW platform again. ठीक है, तो definiteness property अगर satisfy ना हो तो मतलब ये है कि that algorithm may not terminate in finite time. Finite time में complete होना चाहिए, that is called definiteness property. फिर उसके बाद effective, I mean definite मतलब sorry, I interchange that. Definite means it should be clear, unambiguous. Effective means it should complete in finite amount of time, finite time, effective. तो ये 2 जरूरी important properties है algorithm के, right, for completing the definition. So ये है algorithm. उसके life cycle steps क्या है? Diagrammatic यहाँ पर बताया हूँ आपको, so that from these steps you can basically अंडरस्टैंड, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एसेंशियली एल्गोरिथम क्या करना चाहिए। स्टेप 1 वी डिफाइन द प्रॉब्लम, उसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स या कंस्ट्रेंट्स भी आप बोल सकते हो, वी डिटरमिन द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, स्टेप 3 में यू थिंक ऑफ द लॉजिक, यहां पर आप डिजाइन स्ट्रैटेजी प्रपोज करोगे, एल्गोरिथम डिजाइन स्ट्रैटेजी। ठीक है, फिर उसके बाद यू डेवलप द एल्गोरिथम, देन फाइनली यू वैलिडेट द एल्गोरिथम। वैलिडेशन का मतलब क्या है, यू प्रूव द करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस, प्रूविंग करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस कि जो एल्गोरिथम आपने डेवलप किया है, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट, मतलब इज इट मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स विच हैव बीन डिटरमिन्ड हियर और नॉट। ये है मतलब वैलिडेशन का। जनरली वैलिडेशन और टेस्टिंग में फर्क है, आपको पता होगा शायद, those who do not know, validation का मतलब टेस्ट, चेकिंग द रिक्वायरमेंट्स, प्रूविंग वेदर एल्गोरिथम आपका जो डेवलप किए हो वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। एल्गोरिथम इज सेट टू बी करेक्ट, वैलिडेटेड इफ इट सैटिस्फाइज ऑल द रिक्वायरमेंट्स। टेस्टिंग और डीबगिंग का मतलब यह है कि यू प्रोवाइड द डेटा सेट टू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन टाइम एरर्स, राइट, सो दैट इज टेस्टिंग। So testing is done of program, validation is generally done of algorithm. ये है। फिर उसके बाद you carry out the analysis. Need for analysis थोड़ी देर में हम बात कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, क्यों आप एनालाइज करना चाहोगे एन एल्गोरिथम को एंड व्हाट आर दी अप्रोचेस ऑफ एनालाइजिंग द एल्गोरिथम, ये भी देखेंगे। फिर फाइनली यू गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल स्टेप आपका होगा टेस्टिंग एंड डिबगिंग। ये कॉमन लाइफ साइकिल स्टेप्स है। तो जनरली मैं ये कहता हूँ, ये बताता हूँ बच्चों को, फ्रॉम दीज लाइफ साइकिल स्टेप्स एज फॉर एज एल्गोरिथम कोर्स इज कंसर्न, जो हमारा कोर्स है उसमें वी आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 6, डिजाइन एंड एनालिसिस। So from the entire life cycle steps of algorithms, right, or program development, problem solving, we are primarily interested in these two steps. ठीक है? Now need for analysis. ये शायद मैंने क्रैश कोर्स में भी डिस्कस किया है आपके साथ. Why should we analyze? ये देखिए, there are two essential reasons for performing analysis or carrying out analysis. पहले तो ये है primary reason, to make performance comparison. परफॉर्मेंस कंपैरिजन अमंग व्हाट, किसमें आप परफॉर्म कर, कैसे और किसमें आप परफॉर्मेंस कंपैरिजन करोगे, उसके लिए जनरली वी से दैट, आपको जैसे पता है, फॉर ए प्रॉब्लम पी, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव सम प्रॉब्लम पी, एज यू ऑल नो वेरी वेल, सबको पता है यहां पर कि एवरी प्रॉब्लम में हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस, मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग इट,
multiple solutions. Like sorting problem has many sorting techniques. Solution is algorithm. So let's say I have 4 algorithms for my problem, A1, A2, A3, A4. For a given problem P, I have 4 algorithms, I have 4 solutions. And all four are correct. Sabhi correct hai. Then obviously, anybody would be interested to know among all these 4, which is the most efficient one. Correct की बात नहीं कर रहा हूं मैं, all are correct. मैं बात correctness की नहीं कर रहा हूं, please. Generally यहाँ पर confusion नहीं होता, correctness और efficiency. Correctness and efficiency are different. Correctness is with respect to validation of requirements. Efficiency is with respect to performance. ठीक है? With respect to time or space or maybe other resources. ठीक है? So all are correct. So naturally, when all are correct, anybody would be interested to know which is the most efficient one. सबसे best कौन सा है? कोई भी यही पूछेगा, सर ये 4 एल्गोरिथम में सबसे बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है? तो उस चीज को डिटरमिन करने के लिए कि among these algorithm which is the best one, which is the most efficient one, we have to make performance comparison. Compare the performance of these algorithm to find out the most efficient one. To find out the most efficient. लेकिन जब आप बात करेंगे आप efficiency की, right? Efficiency की बात करेंगे तो आप बोलेंगे with respect to what? Efficiency with respect to, देखिए आप efficiency measure करना है तो you have to measure it with respect to some parameter. Which parameter? So those parameters are called resources. तो इसीलिए सबसे पहले आपको resources जो algorithm consume करेगा, जो resources algorithm consume करेगा, आप उसे determine करना होगा, आपको उसको determine करना होगा. Resource consumption. So you determine the resource. Like what could be the resource? The common resources that we generally use are time and space. But here I have put a word etc. क्या कोई मुझे टाइमलाइन में या चैट बॉक्स में लिखकर बताएगा what can be this extra or etc? See, generally we carry out performance analysis or performance comparison with respect to undoubtedly time and space. But in addition to time and space, क्या मुझे चैट बॉक्स में कोई लिख के बताएगा what could be this etc etc other than time and space? शायद मैं क्रैश बैक पे, because I don't remember whether I told or not, फिर से इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि इफ नॉट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव आपको जनरल नॉलेज की तौर पर आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए. कम ऑन, व्हाट कुड बी द अदर रिसोर्सेस other than time and space? Other than time and space, what could be the other resources? Tushar Sisodia, come on, tell me. Complexity means not complexity. Yogesh Dongarwar, please understand. देखिए आप तो परफॉर्मेंस कंपैरिजन कर सकते हो either with respect to time या स्पेस या फिर और कुछ अदर पैरामीटर्स. व्हाट आर द अदर पैरामीटर्स विथ विच यू कैन मेक परफॉर्मेंस कंपैरिजन? या तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करोगे, कंपेयर करोगे, या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सी, मेमोरी इज नॉट करेक्ट आंसर. मेमोरी और स्पेस एक ही है. स्पेस ऑफ मेमोरी अदर देन टाइम एंड स्पेस. या तो आप टाइम से कंपेयर करोगे, टाइम ऑफ दिस एल्गोरिथम इज T1, right? Time of this algorithm is T2, time of this algorithm is T3, time of this is T4. So you compare the time. So you compare with respect to time. उसी तरह you may compare with respect to space. अब मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, other than time and space, there could be other resources also that you can make performance comparison of different algorithms. So बच्चों, that will depend. Anjali Sahu, please listen. That will depend on the computing environment. That will depend on computing environment. Shikhar Mutta, you are right. Registers could be one. जब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर जब डेवलप करते हो, एल्गोरिथम फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, तो रजिस्टर बिकम एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स. उसी तरह अगर आप मोबाइल एनवायरनमेंट्स, मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल एनवायरनमेंट्स में एल्गोरिथम डेवलप करते हो, इफ यू आर ए मोबाइल ऐप डेवलपर, your resource, important resource will become energy. Battery power. Energy becomes an important resource. तो बच्चों, मैं सिर्फ यहां पर एक ही बात आपको ये emphasize करना चाह रहा हूं. I wanted to emphasize only one thing, that don't think that you always analyze an algorithm only with respect to time and space. No, you can analyze the algorithm with respect to energy consumption, battery power consumption.
अगर आप नेटवर्क एल्गोरिथम की बात करोगे या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की बात करोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम्स की बात करोगे, अपार्ट फ्रॉम दीज रिसोर्सेज देयर कैन बी अनदर रिसोर्स लाइक बैंडविड्थ। आपकी बैंडविड्थ भी एक रिसोर्स हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम्स के लिए बैंडविड्थ बिकम्स एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। चैनल कैपेसिटी, नेटवर्क बैंडविड्थ। Your algorithm is said to be efficient in distributed environment if it consumes less bandwidth. Your algorithm in mobile environment is said to be efficient if it consumes less energy. Energy aware, power aware बोलेंगे आप, power aware routing, power aware consumption. ठीक है ना? So these are examples of resources: time, space, battery power, energy consumption, bandwidth consumption, registers. These are the resources. These are the resources, right? Somebody is asking with regard to operating system का Maha revision का PDF. See, I don't know. You have to check in the app, please. PW के app पर देखिए आप. शिखर मुत्ता. I don't have any because I don't use. I don't have access to that app. So those who have the access can basically guide Shikhar Mutta. Where can you find the PDF of operating system Maha revision? Right? You can find it in the app. That's what I know. मुझे वो पता है. ठीक है, चलिए. तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट. लेकिन ये कोर्स हम एल्गोरिथम्स का कर रहे हैं, ये इज बेसिकली फॉर एल्गोरिथम्स दैट आर गोइंग टू वर्क ऑन पर्सनल कंप्यूटिंग डोमेन, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बेस्ड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट. और वहां पर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टाइम एंड स्पेस. सो दैट इज वाई आवर फोकस, जो फ्रेमवर्क हम स्टडी कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं आपने जो किया है अब तक, राइट. तो the framework that we are going to concentrate for on analysis is basically with respect to time and space. So deploying a methodology in the framework to determine the time is called time complexity, and deploying a strategy to determine the space is called space complexity. So yeah, RP is responding. PW app में Gate 2023 crash course section में है OS PDF. Shikhar Mutta, you can basically refer to the comment of RP. He has responded to your query. Thanks to RP. Okay, so you can follow the comment. Fine. So I hope you got the point now. So essentially the basic objective of analysis or the need for analysis is to determine the resource consumption so that after the resources have been determined, you can make performance comparison among different algorithms of the same problem to find the most efficient algorithm. चलिए, ये तो बात बहुत क्लियर हो गई कि हम एनालिसिस क्यों करेंगे. दैट मीन्स वाई, वी आर एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ वाई. क्यों एनालाइज करें हम. अब जब बात समझ में आ गई कि एनालाइज क्यों करना चाहिए, एनालिसिस की जरूरत क्या है, उसके बाद ऑब्वियसली जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ. हाउ का मतलब हाउ डू यू एनालाइज, कैसे आप एनालाइज करोगे. सो दैट इज जनरली इज कॉल्ड एज मेथोडोलॉजी ऑफ एनालिसिस. मेथोडोलॉजी. चलिए, जस्ट ऑफ रिवीजन, ये क्योंकि रिवीजन कोर्स है इसलिए मैं थोड़े टाइम पर आपको भी पूछूंगा क्वेश्चन आंसर, सो दैट यू कैन ऑल्सो रिकलेक्ट एंड ट्राई टू आंसर. बताइए, बिफोर आई शो यू द स्लाइड, व्हाट आर द अप्रोचेस, मेथड्स ऑफ एनालिसिस. जल्दी मुझे चैट बॉक्स में टाइमलाइन में लिख के बताइए प्लीज. मेथोडोलॉजी ऑफ एनालिसिस. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, जस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ रिवीजन, आपके रिवीजन के लिए पूछ रहा हूं. जल्दी बताइए मुझे चैट बॉक्स में कि what are the popular approaches. No रवि तेजा, that is a misconception. अगर आप सीधा स्टार्ट करेंगे बिगो से, मैंने क्रैश कोर्स में भी बताया था बात. मोहम्मद आसिफ, करेक्ट. मेथड, सी, मेथड्स ऑफ एनालिसिस इज नॉट asymptotic notations. That's a misconception. Asymptotic notation is a tool for representing the time and space complexities. Method of analysis, methodology of analysis, approach of analysis. Correct. Shifu Qadir, Shiva, Sritam Swain, Shivam, etc. Correct. There are two approaches. Platform dependent analysis, platform independent analysis. Other way around it is called a posteriori analysis and a priori analysis. ठीक है ना? A posteriori, a priori. Prior का मतलब है before implementation, after implementation. Of what? Of algorithm. आफ्टर इंप्लीमेंटेशन मतलब आप एल्गोरिथम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करोगे, एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लोगे, सॉफ्टवेयर का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रोग्राम बनाएंगे और देन ऑन द हार्डवेयर यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट एंड डिटरमिन द टाइम. ये मेथड को सिंपली हम बोलते हैं अ पोस्टीरियरी एनालिसिस.
लेकिन अपोस्टीरियर एनालिसिस के कुछ ड्रॉबैक है, आई एम वेरी श्योर यू नो इट। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं स्लाइड्स में, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ अपोस्टीरियर एनालिसिस। ठीक है, उससे पहले हम जैसा एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन देख लेंगे। यहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, राइट, एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। मतलब यह है कि जैसे जैसे इनपुट की साइज बड़ी होते जाएगी, जैसा जैसा आप इंक्रीज करोगे इनपुट की साइज, वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाएगा। तो दैट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम यू ट्राई टू रिप्रेजेंट एज ए मैथमेटिकल फंक्शन, जो हम बाद में देखेंगे। तो दिस स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये देखिए आप, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी डेफिनेशन है। उससे पहले मैं यहां पर मेथोडोलॉजी पे आऊंगा, उसके बाद फिर से मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के डेफिनेशन पे आऊंगा। प्लीज हैव अ लुक एट इट। Number 1, a posterior analysis. Number 2, a priori analysis. A posterior advantage, always give exact value, true value of time complexity and space complexity. ठीक है, टाइम और स्पेस जो आप डिटरमिन करोगे यूजिंग a posteriori method, it will report exact value always in units of time, seconds, millisecond, microsecond. This is platform dependent. ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, लेकिन इसके ड्रॉबैक कई है, राइट। ड्रॉबैक इज सिस्टम टू सिस्टम द रिजल्ट्स में वेरी। रिजल्ट जो हो गया ना, शायद मैं कोई एक प्लेटफॉर्म यूज करूं, आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज करो, कोई और पर्सन, थर्ड पर्सन कुछ और प्लेटफॉर्म यूज करेगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, और उस पर जब हम अपने अपने एल्गोरिथम्स रन करेंगे तो आई मे गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। और जब हम डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे डिपेंडेंट ऑन द प्लेटफॉर्म, हमें परफॉर्मेंस कंपैरिजन करने में काफी दिक्कत होगी, काफी परेशानी होगी। और जब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है परफॉर्मेंस कंपैरिजन, वही हमें मुश्किल पैदा कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस टाइप ऑफ एनालिसिस, देन वी डोंट प्रिफर टू कैरी आउट एनालिसिस इन अ पोस्टीरियरी मोड। वी डोंट प्रिफर। व्हाई? बिकॉज it is difficult to carry out, first of all, and moreover because the system configurations and the architecture may vary, so it becomes difficult to carry out the analysis in a posteriori mode. And very correct, Asif is saying experiment carry out on a limited input, comprehensive inputs पर आप analysis नहीं कर सकते हो a posteriori mode में. So therefore no doubt this is going to give you exact value, but it is not preferable for the reason that it is difficult to carry out and it is not comprehensive analysis with respect to all possible inputs. Thirdly, it gives different results which make it difficult to make performance comparison. इसीलिए हम क्या करते हैं? We follow a priori method. A priori method, as the name implies, platform independent analysis. मतलब you are not going to analyze your algorithm on a real machine, but rather you assume some mathematical model of a computer, जिसे हम पॉपुलरली लिटरेचर में बोलते हैं रैम मॉडल ऑफ कंप्यूटर, जहां पर आप अज्यूम करोगे कि यू हैव ए सीपीयू विथ ए कैरेक्टरिस्टिक दैट, सीपीयू की कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि एवरी ऑपरेशन, एवरी फंडामेंटल ऑपरेशन, whether it is addition, subtraction, multiplication, division, assignment, comparison, equal to, not equal to, any fundamental arithmetic, logical, relational operation, it will always take 1 unit of time. ये बेसिस है a priori एनालिसिस का, 1 यूनिट। या एडिशन लीजिए आप, सब्ट्रैक्शन लीजिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एनी ऑपरेशन विल ऑलवेज टेक 1 यूनिट। बच्चों यहां पर 1 सेकेंड नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 यूनिट, दैट्स इट। यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेकेंड्स, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड। हर ऑपरेशन को कांस्टेंट टाइम, शिफू कादिर करेक्ट, यू से कांस्टेंट टाइम, यूनिट टाइम, यूनिट इज कांस्टेंट, यूनिट टाइम। तो ये अजम्पशन से हमारी एनालिसिस काफी सिंप्लीफाई हो जाएगी, काफी सिंप्लीफाई हो जाएगी। और हम दूसरा अजम्पशन हमारे रैम मॉडल में ये है, वी अज्यूम दैट वी हैव सफिशिएंट मेमोरी टू होल्ड द एल्गोरिथम। मेमोरी, कोई मेमोरी की शॉर्टेज नहीं है। So we assume all our instructions, all our fundamental operations are stored in memory, और हम एक एक कर एक एक ऑपरेशन को सीपीयू पर, और हाइपोथेटिकल सीपीयू पर एग्जीक्यूट करेंगे, अज्यूम करेंगे, जो 1 यूनिट ऑफ टाइम डिटरमिन करेगा। तो ऑल स्टेप्स, पूरे स्टेप्स का कितना टाइम होगा हम कैलकुलेट करेंगे, और ये जो टाइम हम लेंगे, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ ए मैथमेटिकल फंक्शन। दिस टाइम दैट वी आर ट्राइंग टू डिटरमिन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ ए मैथमेटिकल फंक्शन लाइक टी ऑफ एन, like T of n, right? This will be a simple function with respect to input size. N जो है input size है, size of input. It will be a simple mathematical function, right?
दैट फंक्शन इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम, कि टाइम कैसा ग्रो हो रहा है। जैसे जैसे आप इनपुट की साइज इंक्रीज करोगे, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 15, 20, 100, 1000, जैसे जैसे आप इनपुट की साइज इंक्रीज करोगे, टाइम ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो जो उसका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम है, जो पैटर्न है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक ए मैथमेटिकल फंक्शन। और जनरली जो हमारी एनालिसिस होगी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस, these functions that we get t of n, these functions that we get will be generally broadly classified into two types। लिख के बताइए मुझे चैट बॉक्स में। जनरली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। क्या टू टाइप्स है? कम ऑन बच्चों, जल्दी लिख के बताइए चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। द फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी by and large arbitrarily can be classified into two types। No, not best case and worst case। Best case and worst case are behaviors। मैं ये बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन है ये बच्चों में। मे बी क्रैश कोर्स में मैं शायद इतना डिटेल में नहीं गया था, लेकिन यहाँ पे अब कर रहा हूँ मैं। नो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, स्टेप काउंट, जिम जोन्स, दैट इज नॉट करेक्ट। नो, आई एम सेइंग व्हाट टाइप ऑफ फंक्शंस आर कैटेगराइज्ड, नॉट बिग एंड स्मॉल। मुझे टेक्निकल नेम चाहिए राहुल कुमार। फंक्शंस दैट आर रिप्रेजेंटिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, right, will be categorized as either of type dash or dash। correct? Ravi Teja Kakarla, poly and non-poly। non-poly को क्या बोलेंगे? correct। Sritam Swen ultimately has given correct answer। you may say the function may be either a polynomial function or may be an exponential function। generally these two categories। जो function आएगा आपका time representing the time would either be categorized as a polynomial function or exponential function। polynomial function को आप generally कैसे represent करेंगे? n power x, x is a constant greater than or equal to 0। उसी तरह exponential function को कैसे represent करेंगे? a power n, a is a constant, a is greater than 1, x is greater than or equal to 0। ये polynomial है, ये exponential है। अब यहां पर ये बताइए, मुझे पता है आपको मालूम है, फिर भी पूछ रहा हूं मैं, which function, polynomial or exponential, rate of growth is preferable for algorithm? बोलिए, polynomial या exponential, which rate of growth of the function is preferable for an algorithm developer for developing algorithm for a given problem? You want polynomial or exponential? Polynomial। excellent। why? Because polynomial has less rate of growth, this has high rate of growth। देखिए आप a power n, जैसे जैसे value of n increases, the function value increases very fast। fast rate of growth है, मतलब algorithm will take more time। ये slow rate of growth है। slow rate of growth का मतलब ये नहीं है कि algorithm will run fast, algorithm will run slow। slow rate of growth का मतलब ये time less consume करेगा, polynomial। ठीक है ना? जैसा कि for example your function is n square, n log n, these are all polynomials। इसकी जो rate of growth है कम है than in comparison to exponential functions like 2 power n, 4 power n, n power n। ये exponential growth है। तो बच्चों फाइनल कंक्लूजन ये है, एज एन एल्गोरिथम डेवलपर, जब आप फ्यूचर में कंपनी में जाओगे और एल्गोरिथम डेवलप करोगे, राइट, एज एन एल्गोरिथम डेवलपर योर ऑब्जेक्टिव शुड ऑलवेज बी टू डेवलप एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम्स दैट हैव पॉलिनोमियल रेट ऑफ ग्रोथ, नॉट exponential rate of growth, polynomial rate of growth। Such problems in the literature are called tractable problems। Problems which have algorithms having polynomial rate of growth are called tractable problems। It is always desirable and advisable to develop algorithm for problem which have polynomial rate of growth। But in the literature, it is also a fact that there are problems, in the literature there are problems which do not have a polynomial rate of growth solutions। What they have is only exponential rate of growth। वो एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी थियरी है जो आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में पढ़े होंगे, यस शिफू खादिर, अबाउट द क्लासेस ऑफ एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट एंड द क्लास ऑफ एनपी। वो आई डोंट वांट टू गो इनटू मच डिटेल्स ऑफ दैट। बस जिस्ट हम इतना ही लेंगे यहां से ये डिस्कशन से कि एज एन एल्गोरिथम डेवलपर आवर ऑब्जेक्टिविटी शुड ऑलवेज बी टू डेवलप एल्गोरिथम्स दैट रन इन पॉलिनोमियल टाइम। हाँ, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं दैट मे नॉट रन, but that is ultimately the goal or the objective। So I don't want to venture into complexity theory where we talk about NP hard, NP complete and then P versus NP, Cook's theorem etc। वो आप important है ये topic, आप theory of computation में पढ़ेंगे और वहाँ से आप उसको रेफर कर लीजिए, ठीक है।
so that is not within the scope of this. चलिए, ये हो गई a priori analysis की बात. Always gives same result मतलब uniformity. It maintains uniformity because the platform is same. Uniformity, non-uniformity in analysis. But the drawback is it will give you only approximate values, not real values of time and space. Because obviously हम यहाँ पर कोई हार्डवेयर पर रन नहीं कर रहे हैं, तो obviously हमारा जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगा, that will not be in exact units of time but rather only estimates or approximates. लेकिन हम ये कहते हैं कि approximates or estimates are also sufficient enough for making performance comparison. Performance comparison के लिए हमें exact values मालूम होना जरूरी नहीं है, right? We do not need exact values as such. अगर relative values भी आपको पता हो, that is sufficient enough for making performance comparison. तो ये है methodology of analysis. So दो questions हमने address किया, why do we need analysis and how to do analysis. So methodology of a priori analysis I have described. You are going to determine the step count of every operation, every statement, add them up, that will give you a function. अब जब function आएगा वहां पर आपका रोल होगा asymptotic notation का, राइट? उससे पहले आपको फिर से एक बार डेफिनेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बता दूं. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम क्वांटिफाइज, दैट मींस यू डिटरमिन द क्वांटिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट साइज. ये आप हमेशा याद रखिए. उसी तरह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी डेफिनेशन है, ऑफ एन एल्गोरिथम क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ स्पेस, मेमोरी स्पेस टेकन बाय एल्गोरिथम टू रन एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट साइज. मैं आपको डिटेल में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताऊंगा और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, हम देखेंगे, राइट? ठीक है, ये स्टेप बाद में आएगा, हम नहीं देखेंगे. विल टॉक अबाउट द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ एनालिसिस बिफोर वी कम टू प्रॉब्लम्स एंड asymptotic notations. The last aspect that we need to understand is another important one. Perhaps this aspect I have not touched in crash course. यहां पर हम देखेंगे behavior of algorithm, or it is also called, यहां पर लिखा हुआ है types of analysis. Types of analysis or behavior of algorithm. There are two things for analysis. One is determining the rate of growth. Generally students get misguided with this. There are two aspects. One is determining the rate of growth, and the second aspect is determining the best case and worst case. Both are different things. In determining the rate of growth आप क्या करोगे, as the size of input increases, जैसा जैसा n की वैल्यू, इनपुट साइज n की वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी, आप you are trying to determine, आप ये डिटरमिन करोगे कि एल्गोरिथम का टाइम कैसे वेरी हो रहा है. That is called rate of growth of time with respect to input size. As the size of input increases, how is the rate of growth of time following the pattern? Is it following a logarithmic pattern? Is it following a linear pattern? Or maybe is it following a quadratic pattern, cubic pattern, right? Or an exponential pattern, right? This is called rate of growth. The other aspect is, देखिए आप यहाँ पर देखिए, behavior of analysis means for a fixed input of size n, यहाँ पर आपको fixed रहेगी input की size, fixed input of size n. एक इनपुट लोगे जिसकी साइज है n फिक्स्ड, एंड आई एम वेरी श्योर यू कैन से दैट दिस इनपुट ऑफ साइज n, मान लीजिए यू आर हैविंग ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम और उसमें n की वैल्यू है 100 फॉर 100 एलिमेंट्स, 1000 एलिमेंट्स, जो भी है, फिक्स्ड इनपुट ऑफ साइज n. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट दिस इनपुट्स कैन बी अरेंज्ड इन डिफरेंट पैटर्न्स. दिस इनपुट ऑफ साइज n can be arranged in different ways. Maybe I can arrange them in increasing order, or I can arrange them in decreasing order, or I can arrange them in random order. ठीक है? Like that, there can be different input classes. हम इसे बोलते हैं different input classes. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं. For an input of size n, I can arrange those inputs in different patterns, different classes. These are called class of inputs. जैसा कि ये एक क्लास इन होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर, दूसरी क्लास होगी डिक्रीजिंग ऑर्डर, तीसरी क्लास होगी रैंडम ऑर्डर, पार्शियल इंक्रीजिंग, पार्शियल डिक्रीजिंग. तो मान लीजिए वी हैव सम फिक्स्ड क्लासेस ऑफ इनपुट I1 to IK, I1, I2, I3 to IK. These are all the different input classes of size n that the algorithm may work on. अब मुझे यहाँ लिख के बताइए कि for these input classes, how will the behavior of the algorithm? Will it be uniform? Will it be same? Will the algorithm behave in the same way, taking the same time for all the input classes? No. It may take different time
or it may take uniform time, same time. So that is called determining the behavior of algorithm. And it is based on this behavior, we classify 3 standard behaviors. Yes, very correct. 3 standard behaviors. One is called worst case, the other is called best case, and third is called average case. What is worst case? Worst case. The input class, look at that. The input class for which the algorithm does maximum work. सबसे ज़्यादा काम करेगा algorithm to produce the output. That input class is called the worst case input. Worst case input. And the corresponding time taken for that is called worst case time. And this behavior is called worst case behavior of algorithm. 3 चीजें हैं, input, time and behavior. The input class, increasing order or decreasing order or random order or whatever order, the input class for which the algorithm does maximum work, taking maximum time, is called worst case input. Or what time is called worst case time. That time is called worst case time. And that this behavior of algorithm is called worst case behavior. Like for example, linear search. Linear search behaves in worst case. कब बिहेव करेगा लीनियर सर्च? जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताइए प्लीज. व्हेन विल लीनियर सर्च बिहेव इन द वर्स्ट केस? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, जस्ट फॉर रिमेंबरिंग. एंड यस, class 1 input is first element of array and class 2 input is last element of array. Yes, quicksort in increasing order behavior is worst case, correct. But linear search कब behave करेगा? Key not found, okay, that is for unsuccess. Successful search में कब होगा? Successful search के लिए worst case behavior कब होगा? Linear search का. Come on, linear search का worst case behavior कब होगा for a successful search? For a successful search. किसी ने कहा unsuccessful search, that is correct. But successful search when the element is present at the last position. Element is present in the last position. यहाँ पर होगा element. When the key, the element that we are searching for is found at the last place. तो आप उसमें क्या होगा? It is doing the maximum work. देखिए आप पूरे comparison बनाएगा वो. It will make all comparisons. It will make all comparisons. So that is called worst case behavior. That is called worst case behavior. When the algorithm is doing maximum work to generate the result for a successful or unsuccessful, that is called worst case input and worst case time. उसी तरह जैसा आपने पढ़ा है, quicksort will behave in the worst case for a sorted, already sorted array. जब array already sorted हो, quicksort will do maximum work to sort it again, either in increasing order or decreasing order. वो है quicksort. उसी तरह best case will be opposite of it. The input class for which the algorithm does minimum work and hence taking minimum time. जैसा linear search में जब आप जो element find कर रहे हो वो first position पर ही हो, then that is the best case. Yes, Chandra Prakash, very good evening. I hope you are doing well. So that is best case. The input class for which the algorithm does minimum work and taking minimum time. जैसा कि quicksort behave in best case when the element that we are sorting, the array elements are not in sorted order. अगर random order में हो तो quicksort का behavior best case behavior होगा. ठीक है? So that is the meaning of best case and worst case. Average case actually from best case, that is minimum to maximum की value lie करेगी, लेकिन we don't have to really care or bother about that, right? क्योंकि गेट एग्जाम में they are concentrating only on best case and worst case. इसीलिए मैं total procedure for average case पर नहीं जा रहा हूँ, but the value I just wanted to intimate to you that the average value always lie between best case and worst case. ये basis पर हम generally एक equation देते हैं. मैंने शायद crash course में आपको कहा था, if I say the b of n function b of n is representing the best case time and a of n is representing the average case time, so a of n is less than or equal to w of n. This is a universal relation for the 3 behaviors of the algorithm. For the 3 behaviors of the algorithm, this is a universal behavior. Best case time of any algorithm is always less than or equal to average. Average is always less than or equal to worst. So this you have to remember always. There were questions in earlier papers based on this universal relation. So ये है आपके 3 behaviors of algorithm or types of analysis. अब रही बात जो मेजर प्लेयर है एनालिसिस में, जो अपना रोल प्ले करता है, वो है asymptotic notation. Asymptotic notation, as I mentioned to you earlier, is a mathematical tool. It is actually a mathematical tool for characterizing the running time of algorithm in asymptotic bounds.
either upper bound or lower bound or tight bound, right? About upper and lower and tight are already explained in the crash course. You can have a look at the video. तो crash course के जो videos है वो भी ज़्यादा lengthy videos नहीं है. If you want on any topic, you can watch them. They are hardly 1.5 hour, 1 hour 40 minutes videos, so that you don't have to waste much time as such. So they are used to characterize the running time. मैंने detail में बताया था कि why we should apply the asymptotic notations in representing the bounds of the functions. Like there are two types of asymptotic notations, big notations and small notations, and they are used for representing any bounds of function. There are three possible bounds the function can have: upper bound that generally represent the maximum time for the case of input, lower bound that represent the minimum time of बोलेंगे best case, and tight bound it happens when both upper and lower bound are same for a given function, right? A function can have three bounds: upper, lower and tight. Upper and lower, upper represent the maximum time for the case of input, that you can call for that case of input as worst case. Lower bound represent minimum time, means that is the best case time you can say for that case of input, for that class of input. And tight bound generally happens when the upper and lower bound of a function coming out to be the same, right? Upper bound भी same है, lower bound भी same है. जैसा कि merge sort. Merge sort is a classical sorting technique or a problem, right, which has unwavering time in terms of lower bound and upper bound. उसका हमेशा uniform time रहेगा n log n. Whether elements are in increasing order or decreasing order or any order, is it not? Merge sort की characteristic है. मेरे अपने terminology में generally बोलता हूँ, non-turbulent behavior. This is my terminology. You don't find in the textbook. Merge sort will have a non-turbulent behavior, no turbulence. एलिमेंट्स अरे के या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहने दीजिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहने दीजिए, या पार्शियल इंक्रीजिंग, पार्शियल डिक्रीजिंग, या सॉर्टेड और इन एनी ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर, अनसॉर्टेड ऑर्डर. अनवेवरिंग बिहेवियर, अनवेवरिंग बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड टाइट बाउंड. दैट इज कॉल्ड टाइट बाउंड. ये ठीक है. सो दैट इज द फिलॉसफी ऑफ इट. तो हम यहां पर देख लेंगे asymptotic notation. जैसा मैंने कहा, classified into big notations and small notation. There are three big notations. Big O for your representing upper bound, big omega represented by Greek symbol omega representing the lower bound, and then we have tight bound theta. Small notations में small o, small omega, ये तीनों पांचों notations के definition बहुत important है, और मैं यहाँ पर assume करके चल रहा हूँ कि सभी लोग जो क्लास में भी present है सभी को अच्छी तरीके से पता है what are the definitions. ठीक है? क्विकली फिर भी एक बार रिकैप करूंगा मैं डेफिनेशंस और थोड़े बहुत सिंपल प्रॉब्लम, बिकॉज वी कैन नॉट हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. पीवाईक्यूज एल्गोरिथम्स की हम किए हैं, कई प्रॉब्लम्स हम सॉल्व किए हैं असिम्प्टोटिक नोटेशंस पर. अगर आपको देखना हो तो उसमें देख सकते हो वीडियो में. यहाँ पर फिर भी और कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स मैं लेके आया हूँ आपके लिए, आप उस पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, चलिए जाएंगे वेरी क्विकली सीइंग द डेफिनेशंस एंड द प्रॉपर्टीज. टू फंक्शंस फॉर एनी असिम्प्टोटिक नोटेशन, बिग O, ओमेगा, थीटा, small o, small omega, we have to have two functions. So f of n and g of n be two functions, right, mapping from the set of integers or reals to the real numbers. We say that f of n is order of g of n. ऐसे लिखते हैं हम. When the growth of g of n is same or higher than f of n, like a less than or equal to b, मतलब f of n is less than or equal to c times g of n, right, for some constant c, for some c greater than 0, and whenever we say, right, whenever we say n is greater than some x or n naught बोलिए आप. This was the definition. I don't have to tell, but anyway फिर से एक बार मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ. Yes, Prashant Prabhakar, in the example for that is a conditional example, conditional problem. एक conditional problem है जैसा कि for example you can take binary search. Binary search, may we have that behavior a of n less than b of n less than w of n, conditional binary search. Assuming the tree is a skewed tree, right? The tree can be a skewed tree. Worst case can be n, average can be log n, and then best can be taken as order of 1. So that is an example, conditional example. Then in physics problems also there are a couple of problems that have behavior, which I don't want to go into those details right now. Later on, if you want, you can get in touch with me through some channel, and you're all intelligent enough to search for me to communicate with me. Okay, right. Like for example, 3n plus 10 gn is n square plus 2n plus 1. So we say f of n has a lesser rate of growth than this, क्योंकि यहाँ पर ये n square है, n square. Don't get confused. It is not 2n, it is n square.
notational convenience. So naturally n square has a higher rate of growth, so therefore we say the function f of n is order of g of n. ये है definition of big O. उसी तरह देख लेंगे हम definition of big omega. This is for lower bound. F of n is said to be omega of g of n when f of n is greater than, just opposite to big O. A is greater than or equal to b. Like for example, I say 3n is equal to omega of 2 power n. देखिए आप, ये function 3 power n is greater than 2 power n, greater than or equal to. ठीक है, जैसा हम एग्जाम्पल जो क्लास में क्रैश कोर्स की क्लास में लिए थे, f of n is equal to n square plus n plus n plus 1. We said that this is big O of n square. It can be big O of n cube, is it not? It can be big O of n power 4. All these are mathematically correct. All these are mathematically correct, right? This is correct, this is correct. लेकिन हमने कहा था always, so if you remember my point, whenever we are representing the big O or omega of any function, we should always take that function g, which is asymptotically closer to the given function. ये बात आप हमेशा याद रखनी है with regard to carrying out asymptotic analysis. So when you are carrying out asymptotic analysis of algorithm, this universal point you have to keep in mind. Whenever any given function is there, f of n, if you want to find the big O or omega of it, we should find that function g which is asymptotically closer to it. Like among these functions, this is loose upper bound. This is loose upper bound of the given function, even though mathematically correct, because definitely n square plus n plus 1 is order of n square and order of n cube, order of n power 4, all are correct. लेकिन इन functions में कौन सा function, which mapping is asymptotically closer? This is asymptotically closer. We say it is order of n square. Arav, you are in class 10 बेटे, क्यों आप फिर इस क्लास में क्या कर रहे हो मेरी क्लास में? एल्गोरिथम से काफी इंस्पायर्ड हो गए हो? शिफू कादिर is telling very correct. Shifu Qadir, very correct comment. Go to sleep, or you solve some mathematic problems that will be useful for you in algorithms learning in future. Correct? और solve some problems. मैथमेटिक्स पे फोकस कीजिए. मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम कोर्स के लिए. अगर आपको समझ में आ रही है टॉपिक तो अटेंड कीजिए, नो प्रॉब्लम. ओके आरव, हैप्पी टू सी यू. माय ऑल विशेस टू यू फॉर योर फ्यूचर स्टडीज. यस, Tarun Patil is also telling very clearly. Focus on board exam. Excellently correct. Yes. Okay. Arav, my best wishes to you for your future career. But I am happy that you are knowledgeable with regard to GATE exam. ये बहुत बड़ी बात है, is it not? Shifu Qadir, Tanish and all other people. Our Arav is familiar with GATE exam. Frankly speaking, when I came into engineering, जब भी मुझे पता चला था एग्जाम का, देखिए आप बच्चे 10th क्लास में पता है GATE exam के बारे में. Very correct. So he knows about the platform PW, and then he ventured into GATE arena and came. So, bache, Arav, please. So, I mean, this is not meaningful to you right now. My advice is don't waste your time. Either go to sleep, or sleeping, I think it is 8:46. You can practice your, make a study. Okay, very good. Focus on JE, correct. Chaliye. So that is the important point you have to follow, asymptotically closer to the given function. ठीक है, इसका सिंपल जस्टिफिकेशन ये है बच्चों कि वाई शुड बी फाइंड. जब मैं ऑफलाइन में क्लास लेता था, अभी तो ऑफलाइन में क्लासेस नहीं है ज़्यादा जगह, तो ऑफलाइन क्लास जब लेता था मैं, तो जनरली स्टूडेंट्स पूछते थे डाउट के, बिकॉज वी शुड हैव 1-to-1 इंटरेक्शन, तो ये पूछते थे कि सर वाई ओनली क्लोजर फंक्शन, व्हाट इज रॉन्ग इन टेकिंग लूज बाउंड. देखिए उसका सिंपल जस्टिफिकेशन ये है कि when I know that my algorithm is getting terminated by taking some amount x of time, I should say only x. I should not say 2x. I should not say 4x. Is it not? That doesn't make sense. उसका और एक simple example यही दे सकता हूँ कि मान लीजिए, like for example, I am residing at some place P1 and I have to go to place P2 और मुझे पता नहीं है कितना टाइम लगेगा. मैं किसी से पूछ लिया, भैया बताइए मुझे कितना टाइम लगेगा to go from place 1 to place 2. That means some locality 1 to locality 2 in the same city in my area. Like for example, in my city, there is a place called Koti and there is another place called Abbots. Nearby, just 5 kilometers. Koti and Abbots are 5 kilometers. अगर मुझे पता नहीं, मैं कभी Abbots नहीं गया, मैं रहता हूँ कोठी पे,
और मैं कभी एबिड्स नहीं गया, किसी से पूछा मैं हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गो टू फ्रॉम कोठी टू एबिड्स, वो बंदा वो बंदे को पता था कितना टाइम लगेगा, वो बोलेगा सर इफ यू गो बाय बाईसाइकिल इट मे टेक हाफ एन आवर, इफ यू गो बाय बाइक इट मे टेक 15 minutes, if you go by car maybe 10-15 minutes, something like that. So now when I get an idea that I can reach Abbott's within 15 minutes, for example, so I should form a strong opinion that definitely I can reach Abbott's within 15 minutes. I should not say that okay I can reach Abbott's within 1 hour. देखिए आप 1 hour. 1 hour is also correct. Somebody say that I can reach Abbott's within 1 hour, that is correct. Within 1 hour I can reach, but this is loose bound and that is not meaningful. That is what I am saying. So when I want to know the time, I am basically interested in knowing the best possible time, the minimum, closest possible time. Closest कितना है, वो determine करना चाहूँ. So that is why I always remember that whenever you are determining the upper bound or lower bound, you should determine that function g of n which is asymptotically closest to the given function. ये बात हमेशा याद रखिए. ठीक है. Theta notation will come into picture when f of n is less than or equal to g of n and f of n is greater than or equal to, of course here some constants are there, c1 and c2, we are not caring. That is f of n is order of g of n, right? F of n is almost equal to g of n, for which we say f of n is theta of g of n. उसका best example हमने कई देखे थे crash course में. For example, n square plus n plus 1 we say is order of n square, and we also said it is omega of n square. So therefore it is order of the same function, omega of same function, we say it is theta of n square. उसी तरह if I write a function f of n is equal to n plus log n, it is order of n and it is also omega of n, is it not? Therefore it is theta of n. उसी तरह if I write f of n is equal to n factorial, we know it is order of n power n. But I am asking as a question, is it omega of n power n? I am putting this as a question, is it to you? I am asking the class. Ravi Teja Kakarla, very good, 401 rank. Ravi Teja, okay, you are student of his, excellent. Then 401 you should have got some IIT, na? Ravi Teja, why you are here? Come on. Why you didn't join IIT? Or at least top level NITs? Very good, very good. So I think you are targeting for your dream IIT, IIT Mumbai or IISc, I hope. No problem, you, my well wishes, good wishes to you. I hope you will do that. And do communicate to me if you get a good rank. My best wishes. Come on, boys and girls, please tell me. Is this true? F of n is equal to n factorial is order of n power n. Is it omega of n power n? Oh, you are targeting ISI. Very good, very good. That's an excellent research institute. At the same time, you should have also tried for IISc. IISc is also equally good for research. Arav, sir, I will also get rank under. Arav is still here in the class. Okay, very good. You seem to be very motivated student. Excellent. Not 100 Arav, you should target for 10th. You are in 10th class, right? And you should target within 10 Arav. Arav should target for within 10, within single digit, because you are still in 10. Okay, okay, very good. Excellent. चलिए, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर एक बात आ जाइए. Come on. So we have some fun also with Arav. F of n is n factorial is order of n power n. Is it omega of n power n? Come on, come on. Is it omega of n power n? बच्चों बताइए, is it omega of n power n? Just to test your basic knowledge. Is it omega of n power n? No, it is not omega of n power n. So therefore, I cannot say that it is theta of n power n. I cannot say it is theta of n power n. This is not correct. It is omega of n, it is omega of n square, it is omega of n, it is incorrect. It is omega of n, it is omega of n square, and we can also prove it is omega of 2 power n. These are all correct for n factorial.
तो मैं यहां पर आपको यही बात कहना चाह रहा हूं कि डोंट थिंक दैट फॉर एवरी फंक्शन व्हेन वी आर राइटिंग n स्क्वायर प्लस n इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ओमेगा ऑफ n स्क्वायर order of n omega of n. So don't think that for every function order n omega will always be the same and therefore you should have theta of n. It is not like that. It is not like that. That is what I am trying to say. फिर उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज है स्मॉल ओमेगा का. आई एम नॉट पुटिंग द डेफिनेशन, आई होप यू नो दैट. दे आर प्रॉपर अपर बाउंड एंड प्रॉपर अपर लोअर बाउंड. स्मॉल ओ का डेफिनेशन खाली यहां पर लिख दूंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. एफ ऑफ एन शुड बी लेस देन सी टाइम जी ऑफ एन. इट इज नॉट इक्वल टू, and this is for all c, so therefore this is the definition of small o. F of n we said is small o of g of n. उसी तरह स्मॉल ओमेगा का क्या डेफिनेशन होगा? f of n is greater than प्रॉपर लोअर बाउंड. प्रॉपर लोअर बाउंड, ये प्रॉपर अपर बाउंड है, प्रॉपर लोअर बाउंड है. f of n is equal to ओमेगा ऑफ g of n. जैसा कि प्रॉपर्टीज है विथ रिगार्ड टू रियल नंबर्स, लाइक a is less than or equal to b, this is for big O. A is greater than or equal to B. I mean, what do you call that? Analogy between asymptotic notation and real numbers. A greater than or equal to B means omega. A is equal to B means theta. A is less than B means small o. A is greater than B means small omega. ये आप हमेशा माइंड में रखिए. This analogous relation between asymptotic notation and real numbers, I am really sure, I am very sure that perhaps you will never go wrong. You will never go wrong. Okay? Asymptotic relation with respect to real numbers. Okay. And I hope these properties we have seen in crash course, you remember it, right? Like for example, reflexive property is never satisfied by small o and small omega, but satisfied by all the three big notations. उसी तरह सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड ओनली बाय थीटा, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन सिर्फ थीटा नोटेशन में इक्वल है. दैट इज वाई इट ओबे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. उसी तरह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इज ओबेड बाय ऑल ऑफ देम. ट्रांसपोज सिमेट्री इट अप्लाइज टू द फर्स्ट टू नोटेशंस. क्या है ट्रांसपोज प्रॉपर्टी? यहां पर लिख देंगे हम आपके कन्वीनियंस के लिए. एफ ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन implies that g of n is omega of f of n. Is it not? जब हम बोलेंगे a is less than or equal to b implies b is greater than or equal to a. यह है ट्रांसपोज सिमेट्री. a is less than or equal to b implies b is greater than or equal to a. मतलब if f of n is order of g of n, मतलब g of n is omega of f of n. ऑब्वियस है, वो है ट्रांसपोज प्रॉपर्टी. उसी तरह basically I have for big omega, big and small o and small omega. I mean, we say f of n is theta of g of n, g of n is theta of f of n. I don't have to tell that. A equal to b implies b equal to a, right? So that is called symmetric property. हम इसे ट्रांसपोज सिमेट्री नहीं बोलते हैं. ठीक है, चलिए एक सिंपल प्रॉब्लम फर्स्ट. कम ऑन, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी मुझे बताइए, जस्ट फॉर वार्म अप पर्पस. वार्म अप के लिए सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए. Okay, you are in third year. Dev Chaudhary, I would say you have prepared nearly 1, 2, 3, 4, 5 subjects. ठीक है, 5 subjects you have prepared. I would recommend you please give a try for writing GATE exam, because you have prepared data structures, programming, so you might prepare for algorithms also, and then you can make a try and get a taste of GATE paper. Definitely you can. And with this knowledge you can think of making a long term preparation, right? A good comprehensive preparation for targeting either a single digit rank or at least 2 digit rank. That should be your objective. Come on बच्चों, इसका आंसर क्या है? Is or are? Come on, I don't want any wrong answers now, because बहुत simple problem है ये. Just chocolate problem है ये. Sigma I cube, it is like p is equal to 1 to n. Sigma I cube अगर आप other dimension में देखेंगे, I is equal to 1 to n. What is the formula for it? n into n plus 1 divided by 2 whole square. Is it not? n into n plus 1, n into n plus 1. Shifu Qadir is saying a only, why? Order of n square. So therefore this is order of n power 4. Is it not? Is it not omega of n power 4? Yes, it is omega of n power 4. Very correct. So therefore
इट इज थीटा ऑफ n पावर 4। ये तो डायरेक्ट कंक्लूजन है हमारा। अब ये बेसिस पर हम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और फिल्टर कर लेंगे व्हाट इज द करेक्ट आंसर। It is theta of n power 4, perfectly correct. Can it be theta of n power 5? No, n power 5 is greater than n power 4, so therefore theta cannot apply. But order of n power 5, very correct, because order of n lose upper bound. Order of n power 5 is correct. ये बताइए, is it not omega of n cube? क्या n power 4 is it not greater than n cube? Definitely it is greater than n cube. So therefore omega also applies. So this is also correct. So congratulations to those people who said ACD. ACD is correct. So as an MSQ question, ACD is correct. ठीक है? Don't make mistakes. These are silly mistakes. आपको पता है पूरे concepts, लेकिन आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है? माइंड को एक बार जब इनिशियली आप स्टार्ट करोगे ना गेट एग्जाम में, जब प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे, हैव पेशेंस, कीप योर आइज क्लोज फॉर अ व्हाइल, ट्राई टू रिकलेक्ट इनिशियल प्रॉब्लम्स के लिए, ट्राई टू रिकलेक्ट calmly and coolly do it. Don't be in a hurry. Many people, Arav is saying ACD now, very good. Jyotisal B, this year you have wasted, I had chance today, but still I have wasted. I mean, 2024, yes, that will be the repentance. So definitely this should be a motivation for the message which is posted by Jyotisai. So don't waste your time, please. That is very, very important. Ankit Agarwal, okay, I'll definitely take your comment forward. I will try to prepare a simple and short video on how to make a career in research. Very good. I can do that very well, just because I'm not just for joking purpose. I mean, not just for boasting or anything. I can definitely answer your query, Ankit Agarwal, because my son himself is planning to convert his program from MTech into PhD research. So I know all intricacies with the conversation that I had with him. So I can definitely make a career planning with regard to research on that. Yeah, he is doing from IIT Madras, Anjali Sahu. So he got All India Gate rank while in final year. So he's doing, by God's grace, in IIT Madras, and doing very well. And he's planning to convert it from research, from MTech to research. Yeah. So this is about ACDs. So I'll keep in mind, Ankita Agarwal, don't worry, I will try to make a video on that and give it to you. And I'll post it on the channel. Okay. चलिए और एक क्वेश्चन ले लेंगे. Come on, boys and girls. अच्छा, this आंसर उसका देखिए, उसका explanation है. Those people at the back end have prepared this. Sum of cubes, which is nothing but n into n plus 1 by 2. So this is the answer. Right. चलिए ये तो हो गया हमारा. अब आएंगे इस पे आइए. Come on, boys and girls. Yes, I do remember, Ansh. Competitive programming का भी pending है. Competitive programming और how to pursue the research in career. ये दोनों videos हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे. Thank you, Jyotisai. Thank you. I will do that. I will definitely try my level best. Come on, boys and girls, work out this problem. Yes, Akib, computer science only. Obviously, he is doing in my domain only. Jyotisai, be careful. Try to apply some basic concept on this. मैं ये भी चाहूंगा आपके चैट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए. आखिब, नो, लॉग इन, नो. Come on. Anjali Sahu, what will be the answer? Ravi Teja, correct. Excellently correct. No, Ankit Agarwal, you have to basically be very strong in series. I told you, the mathematical background जो मैं crash course में discuss किया था, वो बहुत important है
क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है फॉर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Ansh, presently I'm focusing only on 2 subjects. Let us see for COA at later point of time, not now. No, this is not order of 1. Come on, boys and girls, this is a simple question. What is the answer for this? How will you solve it? Root of 1, this is root P, right? Okay. उड़ान बैच. Okay. ठीक है, आप जरूर अपनी उड़ान भरिए प्लीज. आरव को पता है व्हाट इज द सीरीज ऑफ दिस? रूट एन की सीरीज क्या है? रूट पी, रूट ऑफ आई, रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4 अप टू रूट एन. हाउ विल यू सॉल्व दिस? एनीबडी? Tanish, it is not n square. It is not n square. How will you solve this? एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहां पर हमें वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. नो, इट इज नॉट n. Ravi Teja answer is correct, n root n. It is no. It is not sum of n numbers. Now this is not 1 plus 2 plus 3 plus n. Jyoti Sai. Okay, I'll give a hint. Everybody please understand, many a times in mathematics you will have to apply this. Summation is nothing but integration. Summation of something is equal to integration of that. That's the hint I am giving you. That's the hint I am giving you. Got it now? At least some people can work out now. Summation is integration. Come on, Shifu Qadir, not is log n. Integral 1 by x is log x. Am I right? Come on. See, integral 1 by x, अगर आपकी सीरीज होती 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4, तो आप बोलते log x. What will be integral of root of I, root of p? यहां पर root of I अगर आप I लोगे, I is equal to 1 to n, ऐसे ही है ना? What will be that? Now I hope nobody should have any problem in answering this. Integral, yes, root 1 plus root 2 plus root 3 so on, it is nothing but summation of root I is nothing but integral of root I. तो क्या होगा? Integral of x power I, x power n is x power n plus 1. तो उससे क्या बनेगा आंसर? Yes, apex human, that is correct. Look at the answer. Look at the answer. ये इंटीग्रेट किया हम यहां पर, is equal to integral of I, root I is equal to 1 to n. So 1 by 2 plus 1, 3 by 2. Definite integral, putting I is equal to 1 and putting I is equal to n power 3 by 2. So this become a constant, right? So ultimately this is nothing but order of n root n, यहां पर लिखा हुआ है. Be careful boys and girls. ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. ये भी एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. Welcome Ankit Doyla. Ankit Doyla has joined our session. So he is also a great motivator, trying to motivate and keep your momentum of preparation very high. He is joining almost every class and trying to give you a motivation, right? So boys and girls, wish him, right? So thanks Ankit for your message and trying to see the sessions. चलिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप याद रखिए. वेन एवर यू आर हैविंग ए ट्रबल विथ रिगार्ड टू समेशन सीरीज, कभी भी अगर आपको कोई मुश्किल हो समेशन सीरीज में, ये कॉन्सेप्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो इंटीग्रेशन का. समेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. वही बेसिस पर अगर मान लीजिए आपका फंक्शन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई एक्स, जैसा मैंने कहा एक्स इक्वल टू 1 to n, इसकी सीरीज आपको निकालना अगर मुश्किल हो रही है, देन basically you can use integration. That's very simple. Integral 1 by x log x. So this series is nothing but log x. Log n आ गया आपका, order of log n, omega of log n. उसी तरह यहां पर भी हम इंटीग्रेशन यूज किए हैं टू फाइंड आउट दैट. सो ये एग्जांपल देने का मकसद सिर्फ यही था, आपको बताने के लिए कि बात तो आप समेशन सीरीज से कर सकते हो. जैसा सिग्मा आई, आप यहां पर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है आपको,
you can directly take n into n plus 1 by 2. सिग्मा i स्क्वायर है, सिग्मा i क्यूब है, तो डायरेक्टली आप समेशन सीरीज यूज करते हैं. सिग्मा 2 पावर i है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. There is no need to apply integration. You can directly use summation, the geometric progression and try to simplify it, right? So I'm telling you the techniques which you can apply. So whenever there is a difficulty in series formulation, you try for integration approach. इसलिए जो calculus आपने mathematics course में पढ़ा है या पढ़ रहे हो, that is also going to play a role in analysis of algorithm. आशुतोष राय, very good evening. Jim Jones, yeah, correct. चलिए next पे आएंगे. चलिए एक सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है अरेंजिंग द फंक्शंस इन सम ऑर्डर. जनरली पूछा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर. कौन बच्चों बताइए बिफोर आई शो यू द सॉल्यूशन. थोड़े सिंपल फंक्शंस है, जल्दी जल्दी इसे लिख के बताइए. इन व्हाट ऑर्डर शुड दीस फंक्शंस कम. कौन से ऑर्डर में आना चाहिए फंक्शंस. तो वेरी सिंपल. Increasing order. Yes, keep your functions because I'm going to show you the solution shortly. F1 is equal to F8. That is correct. F1 is equal to F8. That is 100% correct. Come on, boys and girls, I got only one answer. What about others? Yes, Tarun Patel, very good. इसीलिए मैं लिया हूं एग्जाम्पल. यस, प्रीतम स्वयं, दैट इज करेक्ट. चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं सोल्यूशन. देखिए ये सोल्यूशन है. F7 is less than F2. Root log n is less than root n. Less than F1 n log n. F1 and F8 have same asymptotic order. Less than F3 2 power n. Less than F4 3 power n. Less than F5 n factorial. Less than F6 n power n. N factorial is less than n power n. Very simple. So ये एक पैटर्न है जिस पर आप अपने आप को फोकस करना है. जनरली मैं यहां पर ये कहता हूं कि आप ये रिमेंबर द डोमिनेंस रिलेशन. कांस्टेंट्स, any constant is less than you can say polynomial or you can say logarithmic. डोमिनेंस रिलेशन जो है लॉगरिथमिक, लेस देन लीनियर, लेस देन क्वाड्रेटिक, लेस देन क्यूबिक. ये पूरे क्लास ऑफ फंक्शंस को हम पॉलिनोमियल कैटेगरी में प्लेस कर लेंगे. पॉली, एंड दीज आर ऑल लेस देन 2 power n, लेस देन 3 power n, so on लेस देन n power n. ये हम कैटेगरी बोलेंगे एक्सपोनेंशियल. ये आप रिलेशन जब भी रिमेंबर करोगे, याद रखोगे, तो आई एम वेरी श्योर यू विल नेवर गो रॉन्ग विद सच फंक्शंस. आपको खाली इतना ही रिमेंबर करना है कौन सा फंक्शन स्मॉल है और कौन सा फंक्शन लार्ज है और ग्रेटर है. असिम्प्टोटिक कंपैरिजन की आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए. और एक भी कुछ एग्जांपल्स है, आप कर सकते हो. ये भी एक ले लीजिए बिफोर वी प्रोसीड टू अदर कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स. इसका भी मुझे जल्दी बता दीजिए ऑर्डर प्लीज. टेल मी द ऑर्डर. Anjali Sahu, n factorial is very simple concept. N factorial is nothing but n into n minus 1 into n minus 2 so on up to 1. ठीक है. So we say that we can write this will be definitely less than n into n into n into so on up to n. So this we say is less than n power n. इस तरीके से हम बोलते हैं. They don't have same relation, Sritam Swain. N factorial is only less than n power n. No, they are not same. They are less than. N factorial is less than the value of n power n. Obviously, they cannot be same. Because n minus 1 is less than n, n minus 2 is less than n, n minus 3 is less than n, etc. You cannot put less than or equal to for asymptotic comparison. N factorial, we don't write like this, is not correct. We have to write only n factorial is less than n power n.
Okay, tell me please, what is the correct order of this? Because in majority, I mean, many of the previous gate questions or previous papers, we have seen problems based on this. We have seen problem based on this. Very good, very good. Ratul Ansari has given the answer. Right, Sritam Swain, okay, fine. Chaliye, I will put the answer for you. You can have a look at it. The relation is like this. एक बार देख लीजिए relation and make sure that it is you are able to understand. F1 is less than F3. F1 is constant. F3 is log n. F4 log n whole square. F2 root n. So always remember log n power x. X is a constant. X is greater than 0. Is asymptotically. A matlab asymptotically. A matlab asymptotically less than root n. Less than n. ये हमेशा याद रखना है. Because many times I find relations like this. People having confusion. Log n power x बतला रहा हूँ. X may be any constant. X may be 1, X may be 2, X may be 3, X may be 4, X may be a constant. Is always less than asymptotically root n. जब भी आपको दो फंक्शंस में प्रॉब्लम हो, फंक्शन 1, फंक्शन 2, अगर आपको दो फंक्शंस में प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा फंक्शन स्मॉल है, कौन सा फंक्शन लार्ज है, देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ डूइंग इट. वन इज टेक लॉग, second is take some values, substitute some values. Take some values and substitute. Take some values, large values particularly, and substitute. ये generally sometime deceptive हो सकता है. Substitute deceptive हो सकता है second method. By and large most of the time of log के approach से जाना चाहिए so that you can get the answer. ठीक है? So I think this is the correct answer for it. उसी तरह मैं एक exercise दे रहा हूँ आपको. This is just for homework purpose. आप वर्कआउट कर लीजिए इसका आंसर स्लाइड में आपको मिल जाएगा, बाद में आप देख सकते हो. ठीक है? एज ए होमवर्क यू ट्राई. देयर आर 15-16 फंक्शन. जस्ट आपको फेमिलियरिटी होने के लिए, थोड़ी प्रैक्टिस होने के लिए, फंक्शंस के लिए कंफर्टेबली कूलली होमवर्क आप कीजिए. इसका आंसर भी है स्लाइड में. मैं अभी नहीं बता रहा हूं आंसर आपको, बाद में आप देख सकते हो. राइट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यू कैन डू इट. ठीक है? मोर सच प्रॉब्लम्स अगर आप ये देखना चाह रहे हो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस, इसमें थोड़ी और प्रैक्टिस आप करना चाह रहे हो, देन यू कैन रेफर एनी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक. डिस्क्रीट मैथ्स जैसे कि एक बुक है बाय मॉथ एंड कैंडल, ये बुक में से ले सकते हो, या ग्रिमाल्डी भी टेक्स्ट बुक है. राइट, ये दोनों टेक्स्ट बुक में से एक चैप्टर रहेगा असिम्प्टोटिक नोटेशन. जैसे मैंने कहा, असिम्प्टोटिक नोटेशंस इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल टॉपिक है वो. ठीक है? तो कैंडल बुक या ग्रिमाल्डी टेक्स्ट बुक में आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के असिम्प्टोटिक नोटेशन के चैप्टर पर जाइए. उसमें एक्सरसाइज में आपको काफी प्रॉब्लम्स मिलेंगे जहां पर कई फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होंगे. उसमें आप थोड़ी बहुत अगर प्रैक्टिस करके इंप्रूव करना चाह रहे हो तो कर सकते हो. हाँ, मैथमेटिक्स सीरीज के लिए मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी, सीरीज आप समराइज करना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, राइट, सीरीज के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉमन टेक्स्ट बुक में अपेंडिक्स में है सीरीज. अपेंडिक्स जो चैप्टर है उसमें यू कैन हैव ए मैथमेटिकल बैकग्राउंड चैप्टर. वहां पर आपको पूरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज और उसके एक्सपेंशंस मिलेंगे. वहां से आप सीरीज के बारे में देख लीजिए. लॉगरिथम्स का भी इंपॉर्टेंट, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. काफी प्रॉब्लम्स में आप यूज करते हो प्रॉपर्टीज, वो भी आपको मालूम होना चाहिए. बेसिक आप कैलकुलस की बुक में जाइए, वहां पे लॉग के प्रॉपर्टीज मिलेंगे, या फिर जो प्रॉपर्टीज कॉमन में दिए गए हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल के, वो देख लीजिए, काफी है. तो विथ रिगार्ड टू फंक्शन दिस इज व्हाट आई हैव टू से. ठीक है? तो ये आपका सोल्यूशन आप बाद में देखोगे. ये देखिए आप, फॉर एग्जांपल n फैक्टोरियल n पावर n, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन, दिस इज द वैल्यू ऑफ f1 n फैक्टोरियल, दिस इज द वैल्यू ऑफ f2 n पावर n. सो नेचुरली f2 इज ग्रेटर देन f1. f2 is greater than f1, f1 is order of f2, right? So this is the for exponential function, this is the dominance relation or dominance function. ठीक है? So this always you remember. चलिए एक बार ये क्वेश्चन ले लीजिए क्विकली, इसका आंसर बता दीजिए प्लीज. f of n is equal to log n into n or n into log n. सिंपल क्वेश्चन है. Which of the following statements is or are correct? f of n is omega of n into log n. f of n is equal to theta of n square
बच्चों ये हमेशा याद रखिए, दिस n square and order of n log n, none of the above. Come on. What is correct? Very good. This is very simple, n log n. Is it not greater than this function? Yes, it is greater, definitely. Is it theta? No, theta से गलत हो गया है. Order अगर होता तो सही बात होती. Order of n log n perfectly correct है, A and C. Majority of the students, almost everybody has said the correct answer. बहुत simple question है. As a homework, what you can do, my dear boys and girls, आप क्या कर सकते हो as a homework? You try all these options. Suppose if I give you the function f of n is equal to log n power n. अगर ये फंक्शन ऐसा होता तो ये 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं, होमवर्क ट्राई कीजिए. ठीक है. उसी तरह और एक फंक्शन, सेम फंक्शन को अगर मैं मॉडिफाई करता n पावर log n, देखिए आप, दो अलग अलग फंक्शंस हैं, log n पावर n, n पावर log n, फिर सही वही 4 ऑप्शंस क्या हो गए. एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस कीजिए आप. ठीक है. डाउट होगा, यू गेट इन टच विथ मी. एज आई सेड, हाउ यू आर इंटेलिजेंट इनफ. सो दैट इज द पैराडाइम. ये दोनों होमवर्क कीजिए आप. दिस विल बी वेरी गुड एक्सरसाइज. हिंट ये है, लॉग लीजिए आप. जहां पर भी कंफ्यूजन होगा लॉग लीजिए. आई एम वेरी श्योर यू गेट द आंसर. ओके. चलिए ये क्वेश्चन आंसर कीजिए. आंसर दिस क्वेश्चन. Yeah, Shifu Qadir, there is a Gate Wallah Telegram channel. You can join that channel and get in touch with me. There is a WhatsApp group also. I don't know how, but you can get in through that. And third option is, as I said, you are intelligent. Muhammad Asif is saying you are intelligent enough, so you should get in touch with me. Come on, what is the answer for this? Yes, B. Come on, boys and girls, work out this. You are given that for all n f of n is greater than, that means f of n and g of n are greater function, positive functions, are positive functions. If f of n is order of g of n, then g of n is also order of f of n. Is it true or false? Come on, what is the answer for this? Tarun Patil, Tejas Gupta, everybody is saying C. Okay. Some people saying B, some people saying C. Now this is not true always. Not always. Is it not? F of n plus g of n, right, is order of max of f of n and g of n. This is perfectly correct by property. If f of n is omega of g of n, then g of n is omega order of f of n. This is also perfectly correct. Why? Because of transpose symmetry property. Transpose symmetry. Right? So naturally 2 and 3 are correct. Both 2 and 3. So our correct answer is C. Very correct. Very correct. Very correct. Come on. Answer this question. Directly coming to some recurrences. Directly jumping to some recurrences. Analyzing the time complexity of algorithm based on some recurrence. Directly recurrence पे आ गया हूं मैं. बच्चों बताइए आंसर. सीतम सेन, yes. Solve this question. Tell me the answer for this question. इसके बाद मैं फ्रेमवर्क की बात करूंगा, लेकिन वार्म अप के लिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं. Just warm up. Come on, boys and girls. C and D options are varying from C and D. Okay, none. Ronak Kumar आखिरी बार saying D, none. Come on, come on. ठीक है, ऐसा करेंगे हम. ये क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद आएंगे, राइट, आफ्टर आई प्रेजेंट टू यू द फ्रेमवर्क. मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूं था कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है विथ रिगार्ड टू दिस. ओके. या फिर shall I ask you one question? What is time complexity T of n representing for this algorithm? कैसे डिटरमिन करोगे आप? Come on. What will be T of n?
n power 4 does not come into recursion. Oh my god. That's a confusion. What will be that is a mistake. Sritam Swain. 80n by 2 plus c बोल रहे हैं आप. Okay. 80n by 2. Is it 80n by 2? Can anybody write the recurrence for this? What will be that recurrence representing the time complexity of this? What will be the time complexity representing the recurrence? ये एक थोड़ा चेंज कर दूंगा मैं. इमेजिन अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो इमेजिन दिस स्टेटमेंट इज शिफ्टेड हियर, दिस स्टेटमेंट इज शिफ्टेड हियर. इंटरचेंज दिस टू. जब क्या होगी रिप्रेजेंटिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? आंसर मत बताइए. ऋषि कुमार भरद्वाज. अंश पंडित, वाई यू आर लेट? कम ऑन, नो प्रॉब्लम. अंश, यू ट्राई टू टेल मी द आंसर फॉर दिस. व्हाट विल बी द रिकरेंस फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का रिकरेंस क्या होगा? आखिब, इट इज नॉट 8 बच्चों. दिस इज a ऑफ n. ठीक है ना? दिस इज a ऑफ n. दिस इज a ऑफ n by 2, right? Multiplied by 8. We are not solving the sub problem of n by 2 8 times. We are multiplying the result returned. Understand this. We are multiplying the result returned by a with 8. We are, listen to my statement. We are multiplying the result returned by a by 8 by a constant. So we are solving only one sub problem. Only one sub problem. We are solving only one sub problem of size n by 2. We are not solving 8 sub problems. Very correct. Ravi Teja Kakarla has given the correct answer. The recurrence for this is t of n by 2 plus constant plus n. Why n? Kakarla, you made a small mistake. Kakarla, we have a statement also. Don't forget, we have statement also. We have statement also. We have statement also. Statement time is order of n. So therefore, this will become my recurrence. This will become my recurrence. This will become my recurrence. We are multiplying 8, so it is not 80n by 2. ये बहुत बड़ा mistake और बहुत बड़ा common problem है बच्चे जो करते हैं mistake. Shifu Qadir, Ravi Teja, come on. This is a common mistake which students make. And it is not plus n square. We are adding the, see, whatever value you are getting here, we are adding n square to it or n power 4 to it. So adding one value to another value take constant time. Multiplying or adding will take constant time. ठीक है ना? So this constant time. You are multiplying the result returned by a with constant a and we are adding something. The adding will take constant time. So therefore the recurrence of this is this. ये recurrence है, not 80n by 2. 80n by 2 बोले तो गलत हो गया. Clear है ये? Is this clear? Very good. Yes. Ravi Teja, I hope you have observed it, what I said. तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? Yes, it is possible. You can find the time complexity. Master theorem से आप कर सकते हो. अगर आपको master theorem पता है, if you know the master theorem, can you tell me what is the answer for this? What will be theta of this if you, by applying master method case? Come on. By applying master method case, what will be the answer for this? Yes. Chandra Prakash, why you have not understood? See, the time taken for executing this is a constant time. The time taken by this statement is n given here. Statement takes order of n times. So n plus constant plus t of n by 2 plus constant. Constant plus constant is another constant. These again constant. So constant plus constant plus constant is a constant c. And the time for a statement is n. And the time for a of n by 2 is t of n by 2. Chandra Prakash. Chandra Prakash, is it clear? Is it clear? Time for this is constant. Time for statement is n. Time for multiplying the result with this is a constant. Time for solving a n by 2 is t of n by 2. Time for adding some value is n. And then this constant time. This constant time.
Constant plus constant plus constant is constant. Plus n plus t of n by 2. That's it. Such types of problems are important. ये बहुत important problem है. So, come on, by applying, which case applies to this? Case 1 or case 2 or case 3? Master method. Come on, boys and girls, which case applies? G rent is asking a question, and I will ask that question to G rent and other people. When will you write? Question B is asked, when will you write 8n by 2? क्या आप मुझे कोई लिख के बताएगा, क्या आप में से कोई लिख के बताएगा, क्या आप में से कोई लिख के बताएगा कि when will you write t of n by 2? जल्दी लिख के बताइए, देखेंगे आपका ऑब्जर्वेशन. कब लिखोगे आप 8n by 2? कब लिखोगे? नो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही है. ये प्रॉब्लम में भी अगर 8n by 2 लिखना होता, या 2 times n by 2 लिखना होता, या 4 times n by 2 लिखना होता, tn by 2 लिखना होता, तो कब लिखते आप? कम ऑन बच्चों, when will you write? कब लिखोगे आप? You will write. No, I'm not asking about problem. मैं पूछ रहा हूं ये फंक्शन में ही, यही एल्गोरिथम में अगर हम 8n by 2 लिखना होता तो हम कब लिखते? हम जब लिखते जब हम we are solving this problem a of n by 2 8 times. यहां पर सिर्फ एक बार सॉल्व हो रहा है n by 2, राइट? a of n by 2 plus a of n by 2 plus a of n by 2 plus a of n by 2 8 times. अगर 8 बार 8 times a of n by 2 कॉल होता फंक्शन यहां पर सिर्फ एक ही बार कॉल हो रहा है, राइट? डोंट थिंक इट इज बीइंग कॉल्ड 8 times. फंक्शन की जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो वैल्यू को आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो यहां पर. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. समझ गए ना बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन एज अ वार्म अप. आगे और आएंगे क्वेश्चंस ऐसे. 8 times अगर हम फंक्शन को कॉल करते, a of n by 2, a of n by 2, a of n by 2, a of n by 2 8 times अगर कॉल करते तो जब 8 times करते. So by applying master theorem, the answer for this is theta of n, order of n. Case 3 applies. Case 3. Check it because I don't want to go into that. Very good. So this is a very good question, please. So बहुत important question है, याद रखिए हमेशा वो बात. चलिए इसका आंसर बता दीजिए फिर से एक बार, going back to asymptotics. Solve this question. Interesting question. Come on. Boys and girls, I don't want you to make mistake. I don't want you to make mistake. Okay, I will give one hint. The hint is MSQ. चलिए, hint is it is MSQ. Hint is it is MSQ, please. Come on, boys and girls. Okay, A and B. Answers are fluctuating between A and B. Pratham Upasani, yes. Tell me the answer. C and D. Oh my God. A, B are true. A is true. Oh. चलिए, बहुत सिंपल मिस्टेक है यहाँ पे, सिंपल कॉन्सेप्ट है. f of n is saying f of n is equal to order of g of n. Suppose if this is there, ठीक है, if this is there, then does it imply that 2 power f of n, if I raise it to the power of 2, will become order of 2 power g of n always? Is it true? क्या ये सही है हमेशा? क्या ये सही है? No, because remember,
Let us take an example. Suppose, for example, f of n is equal to n and g of n is equal to 2n. देखिए आप, f of n is n and g of n is 2n. 2 power n. Is it, I'm asking you as a question, is it order of 2 power 2n? Come on. Yes, this order is perfectly correct. Is perfectly correct. No, it is correct. Because 2 power n is nothing but order of 2 power 2n is 4 power n. हो गया, ठीक है बात. लेकिन अगर हम रिवर्स कर देंगे इसे, प्लीज आई विल रब इट ऑफ. सो दिस ट्रू, ये सही है, ये सही है. यस, अब हम रिवर्स कर देंगे. प्लीज ऑब्जर्व, आई विल रिवर्स इट सो दैट आपको समझने के लिए कर रहा हूं मैं. एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n एंड जी ऑफ एन इज इक्वल टू n. एफ ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी ऑफ n. यस, इट इज ऑर्डर ऑफ जी ऑफ n. f of n is order of g of n. f of n is definitely order of g of n. 2n is order of g of n as per definition. Got it, na? Yes, now you got it. But 2 power 2n is not order of 2 power n. Is not order of 2 power n. Clear hai? Is not order of 2 power n. This is not correct always. So this is always not correct. Be careful. यहां पर एफ ऑफ एन होल स्क्वायर है बच्चों, ऐसा लिख रहा हूं मैं फिर से आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. एफ ऑफ एन होल स्क्वायर, ठीक है. कैन आई से दैट एफ ऑफ एन, कैन आई से दैट एफ ऑफ एन इज ऑलवेज ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन होल स्क्वायर? अगर फर्ज करिए, मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, इफ यू हैव फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन, देन डेफिनेटली आई कैन से एफ ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ n square. Yes, perfectly correct. f of n is equal to 2 power n. It is order of 2 power n whole square. Perfectly correct. Like in, is it always true? Like for example, decreasing function. f of n is equal to 1 by n. Decreasing function. Does that imply that f of n is equal to order of 1 by n square? No, 1 by n is greater than 1 by n square. 1 by n is greater than 1 by n square. 1 by n is not less than 1 by n square. 1 by n is greater than 1 by n square. So therefore this is false. So that means both are false. ये कॉर्मन का एग्जाम्पल है, कॉर्मन का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है ये, ठीक है. So both are false. So therefore A is false, B is false. MSQ, ठीक है. So be careful with the functional knowledge. That is what I said. Functional knowledge is important. चलिए और एक क्वेश्चन. अब मास्टर थ्योरम के बेसिस पर आएंगे थोड़े क्वेश्चंस. आपको शायद पता हो मास्टर थ्योरम क्या है. मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, अज्यूम करके चल रहा हूं कि मास्टर थ्योरम आपको पता हो. क्विकली जल्दी बताइए प्लीज, बिकॉज ऑलरेडी 1.5 आवर हो गया हमारा. असिम्प्टोटिक पर ही डिस्कशन चल रहा है. कम ऑन, इसका आंसर जल्दी बताइए. मास्टर थ्योरम, the value of A is 3. The value of B is 4. Log 3 to base 4. I think it is 0.792 something. So which case applies? Come on, I'm asking you, which case apply? Which case apply? Case 1 or case 2 or case 3? खाली वही बताइए, case 1 or case 2 or case 3? Case 1. Very correct. Case 1 apply. So by case 1, you can definitely say that T of n is order of or theta of n power log 3 to base 4, because 0.792 minus epsilon definitely is greater than n power half. So therefore case 1 apply. So by case 1 answer is A. Very correct. चलिए second question, इसका भी जल्दी बता दीजिए बच्चों. थोड़ा deviate करके पूछ रहा हूँ ये question, आप वर्कआउट कीजिए प्लीज. I hope you will not get deviated or confused. इसका भी बता दीजिए. Root of 2 into t of n by 2 plus log n. Again by master theorem. He is asking like NAT question. NAT.
What will be the value of r? Smallest value of r, minimum possible value of r. मास्टर थ्योरम. आई एम नॉट डिस्कसिंग केसेस. मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको केसेस पता हो, खाली यहां पर यही लिख रहा हूं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए. केस 1 is based on big O, case 2 is based on theta, and case 3 is based on omega definitions. ये आपको हमेशा याद रखना है मास्टर थ्योरम के लिए. और मास्टर थ्योरम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में भी पढ़ाई जाती है और एल्गोरिथम्स में भी पढ़ाया जाता है. तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप दोनों, रेणु मित्तल, दीज आर नॉट टफ क्वेश्चन, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. बहुत सिंपल क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं. हाँ, पीवाईक्यूज नहीं है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है. दोनों इज करेक्ट. दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है. पहले ये बताइए मुझे, और या ये बोलूंगा, पहले ये मान लीजिए कि कौन सा केस अप्लाई होता है यहां पर. विच केस? यू वांट मी टू एक्सप्लेन मास्टर थ्योरम? ठीक है, यहां पे मास्टर थ्योरम के केसेस लिख देता हूं मैं आपके लिए. मास्टर थ्योरम के केसेस एक बार लिखता हूं मैं. केस 1 इज, पहले तो you should remember that the recurrence should be of the form t of n is equal to a into t of n by b plus f of n, right, for n greater than or equal to d, and is equal to some constant c for n less than or equal to d. आपका recurrence relation अगर ऐसा हो, ये फॉर्म में हो, तो केस 1 का डेफिनेशन क्या है? if f of n is order of n power log a to base b minus epsilon for some value of epsilon greater than 0, then t of n is theta of n power log a to base b. ये है केस 1. केस 2 क्या है बच्चों? if f of n is theta of n power log a to base b into log n power k, log n whole raised to k, log n whole raised to k, for some value of k greater than or equal to 0, then t of n is theta of n power log a to base b into log n power k. And case b है k equal to 1, then if it is being satisfied for k equal to 1, sorry, k equal to minus 1, then t of n is theta of n power log a to base b into log n. ये दो केसेस है इसमें, केस 2 में, सब केसेस. थर्ड केस क्या है? if f of n is omega of n power log a to base b plus epsilon, right, when epsilon is greater than 0, and a subsidiary secondary condition is a into f of n by b should be less than or equal to delta times f of n for delta value less than 1. Then we conclude t of n is theta of f of n. 3 cases master theorem के. Case 1, case 2, case 3. तो somebody asks, all the 3 cases मैं लिख दिया हूं जो मैं अपना फॉलो करता हूं मास्टर थ्योरम. थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं इधर से उधर फ्रॉम डिफरेंट टेक्स्ट बुक, बट जनरली आई फॉलो दिस. ये मुझे बहुत सिंपल लगता है, मैं ये फॉलो करता हूं. बहुत सिंपल है रिमेंबर करने के लिए. देखिए मैं भी आई कुड रिमेंबर. ठीक है, दीज आर द 3 केसेस. तो ये बेसिस पर हम यहां पर ये प्रॉब्लम ले रहे हैं. बच्चों इसका आंसर क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए? जिम जोन्स इज टेलिंग करेक्ट, 0.5, very correct. The value of a is equal to root 2. The value of b is equal to 2. The value of f of n is equal to log n. So I have to apply log of root 2 to base 2, log a to base b, which is nothing but half into, कैसे half? This is nothing but log of 2 power half to base 2, which is equal to half log 2 to base 2. मतलब ये value log a to base b is equal to half. That's it. So therefore, by case 1 log n, can I say log n, is it
order of n power log a to base b, which is half, minus epsilon. Yes, for a very small value epsilon equal to, maybe you can take 0.1, 0.0 and something like that. So this become like absolutely like order of root n, like root n concept, root of n to base 3 or base 2, or I mean square cube root of n, or cube root of I mean fourth root of n, or something like that, very small value. So therefore this is perfectly correct, this is perfectly being satisfied, right? So therefore I say by case 1 it is getting satisfied. So what is that value? It is nothing but order of n power. So ultimately what will be that this will be nothing but order of n power log a to base b, which is n power half. So it is saying the time complexity is order of n power r. What is the smallest value of r? The smallest value of r is 0.5. That's all. Smallest value of r is 0.5. Ankit Agarwal. What are you asking? Second case, power of log n should be k plus 1 for, yes, it is k plus 1 only. Now I have written k plus 1 here. Acha, haan. Yes, yeah, this is correct. I thought I wrote k plus 1. K plus 1 hai, case 2. That is right. I thought it is k plus 1, but yes, you rightly pointed out. K plus 1. Correct. No, I have not taken full algorithm. Crash course I have taken. I have covered all the topics in crash course mode in algorithms on the PW channel. चलिए बच्चों इसका आंसर बता दीजिए. Come on, these also a standard question. Come on, boys and girls. The running time of an algorithm, बहुत simple है ये. Yes, this order of 3 power n. Always remember T of n is equal to some, just wait a minute, that sometime it create a problem. I'm just trying to cover it. Yeah. Continue. So if we write T of n is equal to T of n, I'm sorry. Yeah. T of n is equal to, for example, if I have function like T or 2T of n minus 1 plus constant, is nothing but order of 2 power n. उसी तरह अगर है 3 into T of n power n minus 1, you can use back substitution and do it. Then this will be order of 3 power n. 4 into Tn minus 1, 4 power n, like that. A into T of n minus 1, then that will become a power n, like that. You have to remember. This can be proved very simply using back substitution. Okay? So therefore the correct answer is A. Remember that as a generic rule. Now when you do analysis of algorithm, you can basically have 3 types of problems. Here I am trying to say. One is like, for example, you can analyze without loops, just as we did earlier, or interactive algorithms, or maybe recursive algorithms. Interactive, I mean interactive in the sense like iterative, not interactive, sorry, iterative. Non-recursive you can say, iterative, not interactive, iterative algorithm, and with or without loop, both. These are the different categories of frameworks of problems generally that you encounter. ठीक है, इसका जल्दी मुझे आंसर बताइए. What will be the time complexity of this? What will be the time complexity order of count? Come on, just to make a small confusion. यहाँ पर भी generally बच्चे confuse हो जाते हैं. Come on. What will be the answer for this? Order of dash. Is it log n? No. Order of n square. Prashant Prabhakar, is it order of n square? I don't know why people get confused with this. Why people get confused with this algorithm, I don't know. It's very, very simple. It is order of dash. Boys and girls, come on, don't get confused. Is it constant or not? Are we having recursion here? There is no recursion. No recursion. We are not solving the problems. We are simply multiplying the value of n with n plus 1 and then dividing by 2. Operations है ये. Simple operations, constant times, order of 1.
Order of 1. Is it not? Don't get confused. This is very simple concept. Okay. जल्दी बताइए इसका आंसर. Orally चाहिए. I don't want to go into derivations of this. ये standard formats है. These are called standard templates. Standard templates. जैसे ही आप इन्हें देखोगे एग्जाम में, immediately conclusion पे आना चाहिए. You don't have to work out this. How many times the message Sushil will get printed? Yes, this is login time. Initially I is 1, next value 2, next value 4, next value 8, 16 and like that, 2 power k. Last time it repeats is 2 power k is equal to and number of iterations k is log n. So time complexity is order of k, order of log n. Very simple. ठीक है? Remember this. इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स ऐसे लिखेंगे आप, लूप यहां पे लिखेंगे. अगर ये रिवर्स अगर होता, then I would have initialized like I is equal to n while I is greater than 1, right? I is equal to I by 2. इसका रिवर्स है ये, right? This is increasing, this is decreasing. Increasing series 1, 2, 4, 8, 16, 32. This is decreasing series. या तो आप increasing कर लो, decreasing series कर लो. ये भी log n है, सेम है दोनों. So remember this. These are two standard templates. ठीक है? जब nested loops होते हैं, ये standard templates को combine कर कर आप very fast you should be able to work out the complexity of algorithm. चलिए जल्दी इसका, अच्छा ये तो solution है इसका, आप बाद में देख सकते हो, मैं वो जो बताऊं. इसका आंसर बता दीजिए. Now earlier it was getting multiplied by 2, now it is getting multiplied by 3. Multiplied by 3, so this will be what? This will also be, come on, this will also be correct. Ashutosh Racha, you're right. Base is 3. This is also log n, but base earlier was 2, now base is 3. Agar 4 hota, base 4. 5 hota, base 5, like that. Log n to base 3. Excellent, excellent, very correct. चलिए. Yes, that is the answer. इसका आंसर बता दीजिए जल्दी. Come on, fast boys and girls. These are just warm up practicing problems. Warm up practicing problem. कोई ज़्यादा deep dive concepts नहीं है इसमें. कोई ज़्यादा deep dive concepts नहीं है. Very simple questions. इसका आंसर क्या है? Nested loops है, लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि दिस इज रिपीटेड फॉर कांस्टेंट टाइम. देखिए आप 1 to 10 है, तो दिस इज रिपीटिंग फॉर n टाइम, दिस इज कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट, C1 C2. सो देयरफॉर दिस इज ऑर्डर ऑफ n. वेरी करेक्ट, बहुत सिंपल. पूजा गुप्ता, इट इज नॉट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, बी केयरफुल. अंश पंडित, इट इज नॉट n स्क्वायर. क्यों? दिस इज नॉट रिपीटिंग फॉर n टाइम, दिस इज रिपीटिंग फॉर 10 times. Per iteration it is repeating for 10 times, so total number of times that it get printed is 10 into n, which is order of n. Total number of times Dhananjay get printed is 10 into n, order of n. Come on, inner loop is constant, yes. ठीक है, be careful with such things, be careful with such things. Come on, next. इसका आंसर बता दीजिए. यहां पर थोड़ा केयरफुल रहिए बच्चों, be careful with this. बी केयरफुल. जल्दी से मत बताइए, आराम से सोच के बताइए. इनर लूप में क्या हो रहा है देखिए, अनफोल्डिंग प्रोसेस अप्लाई कीजिए एंड देन यू कैन टेल मी द आंसर. Many people go wrong. 90% of the people generally when we solve this question, they will go wrong. Come on boys and girls, what is the answer for this? It is not D. ठीक है, अब हम यहां पर बोलेंगे, देखिए आप, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा. प्लीज ऑब्जर्व. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस लूप इज नॉट देयर, दिस फॉर लूप इज नॉट देयर हियर. अगर ये फॉर लूप यहां पर नहीं होता, अगर ये फॉर लूप यहां नहीं होता, ये फॉर लूप अगर नहीं होता, देन व्हाट वुड हैव बीन द आंसर? व्हाट वुड हैव बीन द आंसर? Get CSC, very good. Please answer this question then. Get CSC. Then answer would have been log n, no? Correct. Everybody is saying correct.
So now because of this loop present, because of this loop being present, the time complexity will increase or decrease? ये बताइए. अगर ये ना होता तो लॉग एन है. अब ये रिपीट नंबर ऑफ टाइम, ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है ना, ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है. पर आइट्रेशन इट इज मेकिंग सम नंबर ऑफ आइट्रेशंस इन द इनर लूप, इट विल इंक्रीज. तो जितनों भी कहा इट विल बी लेस देन लॉग एन तो गलत हो गया. तो इट विल इंक्रीज फ्रॉम लॉग एन, इट विल इंक्रीज फ्रॉम लॉग एन. ठीक है, तो कितना होगा, क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? लॉग एन तो नहीं है ऑप्शन, राइट? तो क्या हो, एन लॉग एन होगी या एन इंटू लॉग एन होगी या एन होगी? क्या होगा आंसर? अब बताइए क्या होगा आंसर. ये एन टाइम्स नहीं हो रहा है, प्लीज ऑब्जर्व, दिस इज नॉट रिपीटिंग फॉर एन टाइम्स. यहां पर जे है, देखिए बच्चों, यहां पर जे है, इट इज नॉट एन. प्लीज रिमेंबर, अगर यहां पे ये एन होता तो दम हम बोलते हैं आंसर एन लॉग एन होता. यहां पर एन नहीं है, प्लीज ऑब्जर्व, दिस इज जे, सॉरी दिस इज जे. प्लीज ऑब्जर्व, यू आर नॉट फॉलोइंग, दिस जे. अनफोल्डिंग कीजिए आप. चंद्र प्रकाश, व्हाट इज आंसर चंद्र प्रकाश? आंसर इज, कम ऑन अंश पंडित, इट इज नॉट सी, इट इज नॉट. ओके, आप क्या कीजिए, यू दोज हु आर वर्किंग आउट, प्लीज डू अनफोल्डिंग प्रोसेस, प्लीज डू अनफोल्डिंग प्रोसेस. First time, listen boys and girls, first time J is N. So this will repeat for how many times? First iteration, yahan pe dekhiye, iteration number 1. This will be repeated how many times? Gate wala will come how many times? N times. Unfolding. Unfolding. Second iteration plus. Second iteration में क्या होगा? J की वैल्यू N by 2 हो गई है, right? N by 2. So this will be printed N by 2 times. J की वैल्यू next 3 हो गई. Third iteration, not 3. J की वैल्यू, third iteration, right? So this will be printed how many times? Come on. N by 4 times. ठीक है ना? Is this okay? Come on boys and girls. Not N by 3, N by 4. N by 4, N by 2 by 2, N by 4. Is it correct? अब बता दीजिए अब आंसर. मैं यहां पर आके छोड़ रहा हूं आपको. अब यहां से आप प्लीज कैरी आउट एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर. What will be the answer now? N plus N by 2 plus N by 4 plus N by 8 plus N by 2 power k. Yes, now people are telling the answer. देखिए ना आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे आप लोग. Just because don't apply, यहां पर N J by 2 है, हमने पहले कहा था log N, so N log N होना चाहिए आंसर. नहीं, अब सही दे रहे हो सब आंसर, अब सही दे रहे हो. So this is nothing but N outside sigma 1 by 2 power I is equal to 1 to k. K is the number of iteration. Number of iteration made is log n. Right? So therefore, the formula for this summation is nothing but n into 1 minus 1 by 2 power k is equal to n minus n by 2 power k is equal to n minus 1 is equal to order of n, theta of n. इतना सिंपल है. तो माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, यही मेरी अपील है आपसे कि डोंट गेट एक्साइटेड बाय लुकिंग एट द प्रॉब्लम. हैव पेशेंस. मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं, बार बार आपको यही कह रहा हूं, हैव पेशेंस. अच्छा और कीजिए क्वेश्चन को. ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं गेट में, ऐसे ही ट्विस्ट अप्लाई करते हैं गेट में. ठीक है, तो ये ट्विस्ट को फॉलो कीजिए. ठीक है, वेरी गुड. चलिए, ये तो मैं शायद ऑलरेडी हैव सॉल्व, मैं डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ आंसर पूछूंगा इसका. Come on, boys and girls. What is the answer for this question? What is the answer for this question? ये मैं ऑलरेडी क्रैश मोड में सॉल्व किया हूं, क्रैश कोर्स में. टाइम मैनेज कीजिए स्वीतम स्वेन, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट. वेरी गुड अंश पंडित. Come on. What is the answer for this question? B. Correct. B आंसर बिल्कुल सही है.
आप फिर से एक बार एनालाइज कर सकते हो, उसी तरह अनफोल्डिंग प्रोसेस अप्लाई कीजिए, यू विल गेट आंसर बी एज मेनी पीपल आर सेइंग हियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये रिकर्शन है। अब रिकर्शन में बताइए इसका वेरी क्विक, दीज आर ऑल एज आई सेड अर्लियर स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम्स, स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम्स। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। If t of n is the time, t of n is equal to constant c for n is equal to small, right? N is equal to 1, let us say, or n is equal to 0, you can say. And what will be t of n when n problem is large? Some constant time plus constant is a constant time plus t of n minus 1. अगर आप इसे solve करोगे, then this will be order of n. This will be order of n. Many people have told correctly. चलिए, very good. ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, याद रख लीजिए। उसी तरह इसका भी टाइम जल्दी बता दीजिए बच्चों, इसका भी बता दीजिए, डोंट गेट कंफ्यूज। क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी? ओरल बोल सकते हो आप, मैं थोड़ा बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लिखा हूं, यहां पे रिकरेंसेस लिखा हूं। सोनू, आई वुड से दैट मिनिमम, जैसा कि अंकित ने एक शॉर्ट में बताया था, कि यू शुड टारगेट एटलीस्ट at this point of time, if you really want to grab IIT, you target for at least 50 to 55 marks. Then definitely you can crack into IIT. 50 to 55 आप crack कीजिए, some IIT you will get compulsory. But sometime 45 to 50 also, but in second phase थोड़ा आपको struggle रहेगा जब। Shifu Qadir, maybe you sometimes, if you are lucky enough, you can get. Yes, seriously, yes. Ankit Patel, I'm telling you, seriously, you can get marks. Yes, marks. I'm talking about marks. Okay, let's not bother about it. Let's concentrate on question. Come on. What is the complexity for this? What is the we should not deviate from the concept. We should not deviate from the momentum of solving problems. Yes, Prashant Prabhakar, you are right. This equation will become, directly writing the equation, constant time plus, now this will take how much time? This will take n time plus t of n minus 1. The moment you draft this equation, this is nothing but order of n square, finish. Order of n square. ये हो गया केस। फिर उसके बाद इसका बता दीजिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी प्लीज। रिकरेंस क्या होगा? रिकरेंस लिख लेंगे हम। रिकरेंस t of n is equal to constant time plus, again look at this, what is this? This is nothing but log n plus t of n minus 1. So if you simplify this recurrence, what will you get? What will you get? What will be the answer? Very correct. Many people, oh excellent, this is nothing but n log n. This is n log n series question. The time complexity is order of n log n, theta of n log n. Very correct. चलिए, सॉल्विंग रिकरेंसेस, ये मैं आई जस्ट वांटेड टू इग्नोर बिकॉज ऑलरेडी यहां पर भी मतलब दिस द बैक एंड टीम हैज प्रिपेयर दिस फॉर मी। आप बाद में इसमें देख सकते हो, दे हैव डिफाइंड द प्रोसीजर फॉर बैक सब्स्टिट्यूशन। दोज ऑफ यू आर नॉट फेमिलियर, you can have a look at this procedure later point of time. मैं quickly इसे ग्लास थ्रू करूंगा. This how it is equal to order of n square. The backend team has made a substitution method here. So those who do not know can follow this at later point of time because I'm already knowing that many of you know this procedure. इसकी क्या होगी complexity? This is nothing but order of log n. This is order of log n, right? उसका भी explanation यहाँ पर दिया गया है. I hope you know that. ठीक है? That's right. इसका क्या होगा बच्चों बताइए मुझे, विदाउट मी एक्सप्लेनिंग द बैक सब्स्टिट्यूशन. जल्दी इसका बताइए क्या है. कम ऑन दोनों, वेरी गुड वेरी गुड. कम ऑन, दिस इज नथिंग बट, यस दिस इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ एन, थीटा ऑफ एन. ऑर्डर ऑफ एन और थीटा ऑफ एन, ये भी बिल्कुल सही है. ठीक है, ये देखिए इसका सब्स्टिट्यूशन है. दोज हु डू नॉट नो कैन हैव अ लुक एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम. मास्टर मेथड जैसे मैंने कहा था, ये 3 केसेस मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किए हैं, यहां पर वही सेम अप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं. दिस आई डोंट हैव टू बॉदर, यू कैन लुक एट दैट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम. मैंने क्रैश कोर्स में रिकर्शन ट्री के बारे में बताया था आपको. रिकर्शन ट्री, यस, रिकरेंस एल्गोरिथम. विच रिकरेंस एल्गोरिथम अंश पंडित, विच रिकरेंस एल्गोरिथम यू वांट टू एक्सप्लेन? ऑल दीज विच वी हैव डन आर रिकरेंस एल्गोरिथम्स ओनली. जैसा मैंने पिछले कहा था, वो रिकरेंस एल्गोरिथम ही थे. तो उसके एक्सप्लेनेशंस ऑलरेडी हम क्रैश कोर्स में भी देखे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बैक मास्टर मेथड.
मैं यहाँ पे फिर से मास्टर मेथड भी बताया हूँ आपको, आप देख सकते हो, या अगर मेरे क्रैश कोर्स के वीडियो ना देखे हो, ना अगर आप ना देखा हो तो आप देख सकते हो, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देम. ओके, ठीक है. Now in the crash course also I told you that recursion tree approach of solving recurrences is also equally important. It can be used for solving problems which are symmetric in recurrences and asymmetric. Particularly asymmetric recurrences are damn useful for solving problems of recursion by using recursion tree method. जैसा ये symmetric case है, ये symmetric case. Symmetric का मतलब ये है कि सब प्रॉब्लम्स आर ऑफ सेम साइज. देखिए आप, सेम साइज है, n/2 n/2 n/2. तो उसका रिकर्शन ट्री अप्रोच, ये रिकर्शन ट्री दिया गया है. हाउ दिस इज यूज्ड टू गेट द सोल्यूशन आंसर फॉर दिस इज एज ऑर्डर ऑफ n. यू कैन चेक दैट. कैसा डिराइव करते हैं हम रिकरेंस? या डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच. द इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ साइज n सॉल्वेबल इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ साइज n/2 and n/2. टू प्रॉब्लम्स ऑफ साइज n/2 and n/2. तो इसका कंप्यूटेशनल कॉस्ट रूट पे जो देखिए आप कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट. इसका भी कांस्टेंट होगा, इसका भी कांस्टेंट होगा, देयरफॉर 2c. इसका भी कांस्टेंट, इसका भी कांस्टेंट, इसका भी कांस्टेंट, इसका भी कांस्टेंट, देयरफॉर 4c. मतलब ये जो सीरीज आएगी आपकी c प्लस 2c प्लस 4c प्लस 8c एंड सो ऑन, c इंटू सिग्मा 2 पावर i इज इक्वल टू 1 टू सम k, राइट. इस तरीके से. तो n इज इक्वल टू 2 पावर k. सो अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप्लाई करोगे, this is nothing but like, see, it's 2 power k minus 1, something like that. You get 2 power k minus 1, which is order of n minus 1, which is nothing but order of n. तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. यही अप्रोच अगर आप असिमेट्रिक केसेस के लिए भी अप्लाई करेंगे, जैसा कि यहां पर मैं बता रहा हूं असिमेट्रिक केस. यहां पर है एक एग्जांपल, ये है, देखिए आप, असिमेट्रिक. असिमेट्रिक केस का मतलब ये है कि फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ साइज n/3, सेकंड प्रॉब्लम इज ऑफ साइज 2n/3. इट इज डिफरेंट, इट इज नॉट सेम. ऐसे क्वेश्चंस, राइट, ऐसे क्वेश्चंस इफ यू ट्राई टू सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत टाइम लगेगा, राइट, बहुत टाइम लगेगा. अगर आप मास्टर मेथड अप्लाई करो तो नहीं कर सकते केस को. तो द ओनली मेथड फॉर सॉल्विंग दिस मोर इफेक्टिवली, मच इजीली, इज बाय यूजिंग रिकर्शन ट्री मेथड. असिमेट्रिक केस, ये जितने भी केसेस डिस्क्राइब मैं यहां पर कर रहा हूं, ये पूरों का डिस्कशन यू कैन फाइंड इन द टेक्स्ट बुक ऑफ कॉर्मन से ही लिए हम यहां पर, कॉर्मन से. रिकर्शन ट्री अप्रोच देखिए आप, फर्स्ट लेवल पे प्रॉब्लम का स्ट्रेंथ है n, साइज ऑफ प्रॉब्लम हियर इट इज n/3 and 2n/3, राइट. सो टोटल साइज देखिए आप, आई मीन the computational cost that we are spending at the root for the first level is n. Second level n/3 plus 2n/3 n/3 square plus 2n/3 square plus 2n/3 square. अगर पूरों को आप ऐड करोगे लेवल पे अगेन n, so therefore n plus n k times आएगा, where k is equal to log n to base 3/2. so therefore this will become like order of n log n to base, यहां पर देखिए आप 3/2 ऐसे आएगा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे. So these again we can just write like order of n log n. So in conclusion what I am trying to say, अगर सिमेट्रिक केसेस है, मेरा फाइनल कंक्लूजन आपको बता रहा हूं मैं, सिमेट्रिक केसेस अगर है सब प्रॉब्लम्स के, यूज मास्टर मेथड. अगर असिमेट्रिक केसेस है, यूज रिकर्शन ट्री. दैट इज व्हाट आई वुड से. इसको और थोड़ा अगर आप आगे बढ़ के देखना चाह रहे हैं, कॉर्मन की बुक से देख सकते हो, या यहां पर ट्री मेथड में, यहां पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा हूं, एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आप चाह रहे हो तो कॉर्मन की टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, आप देख सकते हो, राइट. तो मैंने अज्यूम किया हूं जहां पर भी आप रेगुलर कोर्स ऑफ एल्गोरिथम पढ़े हो वहां से आप देख सकते हो, या कॉर्मन की टेक्स्ट बुक से देख सकते हो, या एक जनरल फॉर्मूला अगर आप मुझे कह रहे हो देने के लिए मैं दे सकता हूं आपको फॉर असिमेट्रिक केसेस, t ऑफ अल्फा n प्लस t ऑफ 1 माइनस अल्फा n प्लस सम बीटा n. अगर रिकरेंस ऐसे फॉर्म में हो, रिकर्शन ट्री मेथड इज ऑलवेज सुपीरियर. रिकर्शन ट्री मेथड इज ऑलवेज सुपीरियर. इनका सभी का मतलब वेयर अल्फा is lying between 0 and 1, is lying between 0 and 1, equal नहीं रहेगा, just 0 less than alpha less than 1. मतलब अगर हाफ है ये भी हाफ, ये अगर 1/3 है ये 2/3, ये 1/4 है तो 3/4, 1/5 है 4/5, इसी तरह 1 माइनस अल्फा. इन सभी का आंसर, ये रिकरेंस ट्री का सभी का आंसर होगा ऑर्डर ऑफ n log n. ये आप बात as a general formula remember कीजिए. you keep this as a general formula.
ये मार्क करके रख लीजिए जनरल फार्मूला. The answer for all these recursion trees by recursion tree method, the answer for all these recurrences by recursion tree method is order of n log n. ठीक है, उसका डेरिवेशन ये है, ये है डेरिवेशन. ठीक है, चलिए ये हो गया मास रिकर्शन ट्री का भी कवर कर लिया हम. ये थोड़ा आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीट शीट है. चीट शीट, द शीट टू बी कैरिड फॉर चीटिंग पर्पस इन द एग्जाम. चीट शीट, जस्ट जोकिंग. ओके, देखिए आप पूरे रिकरेंसेस है, उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज एक बार अच्छा देख लीजिए. आपके पास रह गए नोट्स, ये आप बार बार इसको एग्जाम तक रिवाइज कर सकते हो, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट वेरी वेल. ठीक है, हाँ, जब अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है. यस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में दो कंपोनेंट्स है, जैसा मैंने यस, all these videos are available on the channel for GATE exam. Subhajit Gorai, what I would say is crash course में we are not going into depth. वो बिल्कुल क्रैश जैसा नेम है, क्रैश मोड. नेचुरली वी कैनॉट कवर द होल कोर्स इन मैटर ऑफ 5 days और 7 days और 10 days. ठीक है, बट अगर आप पहले से पढ़े हो, थोड़ा बहुत ब्रशिंग अप करना हो, तो आप क्रैश कोर्स के लिए वीडियोस देख सकते हो, वो मेरा मतलब है. ठीक है, बट बाय एंड लार्ज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छा डिटेल में हम कवर किए हैं क्रैश कोर्स में, आप देख सकते हो वीडियो. राइट, ठीक है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में दो कंपोनेंट्स है, वन इज इनपुट स्पेस, द अदर इज वर्क स्पेस. मैंने क्रैश क्लास में भी आपसे बताया था कि while computing the space complexity we never take into consideration input space. Space complexity is always work space, additional space in the form of recursion stack, in the form of additional data structures that we are requiring, right? So always remember space complexity is equal to order of additional space, not input space, additional space. Additional space जिसे हम बोलते हैं वर्क स्पेस, जिसे हम बोलते हैं वर्क स्पेस. ठीक है, जैसे कि सिंपल एग्जांपल्स है यहां पर. यह है, जल्दी मुझे बताइए व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम. मैं क्रैश कोर्स में भी डिस्कस किया था, फिर से एक रिवीजन के तौर पे, पूरा डिराइव नहीं करूंगा, लेकिन आपसे पूछूंगा सेम प्रॉब्लम जो मैंने वहां पर क्रैश कोर्स में डिस्कस किया था, यहां पर फिर से रिवीजन के लिए आपसे पूछ रहा हूं. What is the time and space complexity of both these algorithm, algorithm 2, algorithm 1? Come on, boys and girls, fast. What will be the time and space complexity of this? रिकरन जो बन जाएगा इक्वेशन का, टी ऑफ एन इज इक्वल टू कांस्टेंट स्पेस प्लस, देखिए आप ऐड कर रहे हो वैल्यूज, तो टी ऑफ एन माइनस वन, मतलब दिस ऑर्डर ऑफ एन. कितने रिकर्सिव कॉल्स कॉल कर रहे हो आप? ऑलमोस्ट एन कॉल्स मेक कर रहे हो, मतलब जो रिकर्शन स्टैक यहां पर लगेगी, एन कॉल्स के एक्टिवेशन रिकॉर्ड जाएंगे, एन कॉल्स, ऑर्डर ऑफ एन. तो देयरफॉर द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन. समझ गया ना? Ashwin Mahajan, yes, 100%. What you are asking is 100%. Weekdays and weekend में बिल्कुल same syllabus पढ़ाया जाएगा. Like for example, earlier I completed operating system for weekend batch, and now I am doing for weekday batch. Same syllabus, same content. चलिए इसका बताइए complexity. ये देखिए आप, इसका time complexity आपका बन जाएगा T of n is equal to constant plus T of n by 2. हमने ऑलरेडी डिफाइन किया दिस ऑर्डर ऑफ log n. नंबर ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स जो स्टैक पर जाएंगे फॉर रिकर्सिव कॉल्स विल बी प्रोपोर्शनल टू दैट्स n by 2, n by 4, n by 8, दैट इज नथिंग बट log n सीरीज, हमने ऑलरेडी कहा. तो देयरफॉर द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर रिकर्शन स्टैक इज ऑर्डर ऑफ log n. ऑर्डर ऑफ log n, वेरी करेक्ट. ऑर्डर ऑफ log n, वेरी करेक्ट. वही एक्सप्लेनेशन है यहां पर, हमने देखेंगे. इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जस्ट बताइए, मैं ऑलरेडी सॉल्व किया हूं, बट हाउएवर यू कैन टेल मी व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इक्वेशन है टी ऑफ रूट एन प्लस सी. आई जस्ट वांटेड टू चेक, डू यू रिमेंबर व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस?
what is the time complexity of this recursive algorithm. Orally आप याद होना चाहिए, because these also standard template, please. ये standard templates है पूरे, जितने मैं आपको solve करवा रहा हूँ, revise करा रहा हूँ, ये पूरे standard templates है. Come on, boys and girls. This will be how much? No, this is not login. This is not login. Be careful. बच्चों, this is not login. This is not n by 2. This is root n. Root n मतलब कम रहेगी. When you solve this, what will it be? N power 3 by 2. No. Yes, Ashutosh Rai. If you work out this, this will be order of log of log n. Order of log of log n. मैंने crash course में solve किया है problem, if you remember. It is not order of 1. It is order of log log n. Watch my video in crash course batch. I worked out that. It will come out like, for example, n power t of n power t of n is equal to t of n power 1 by 2 power k. Right? Plus constant like that. So such that n power 1 by 2 power, here it will be like k. So 1 by 2 power k is equal to some 2. Then finding the value of k from here, it is nothing but log of log n. इस तरीके से simplify होगा ये recurrence. Remember that. The number of recursive calls will be order of k. So space complexity of this will also be order of log of k, a log of log n. Those many recursive calls, those many activation records on the stack. So this is space and time complexity of this algorithm. चलिए अब next module पर जाएंगे very quickly. अब यहाँ पर divide strategies में जितना हो सके मैं आपको comprehensive, concise mode में जो important problems है उनके properties हम देखेंगे, क्योंकि इतने limited time में हम we cannot solve all the problems as we did in crash course also. जैसा कि merge sort हम detail में किए थे, उस तरह हम यहाँ पर पूरा detail में तो नहीं जा सकते, लेकिन important highlights keeping in view of crash revision, we will try to go into it. So these are the various problems which you can think of preparing for gate purpose from divide and conquer. जैसा कि है finding max min, power of n function, binary search, merge sort, quick sort, Strasson's matrix multiplication, selection procedure, counting number of inversion. These are some of the applications, some of the problems which are solvable by using divide and conquer method. I'm very sure all of you who are present in the class definitely know all these problems. अगर कोई एक problem आपको पता ना हो, आप quickly textbook देखिए और उसके बारे में पढ़िए, ठीक है? Right? So I'm not defining the problems here. Obviously, I cannot define the problem like I can say something like this. Max min problem क्या है? You are given a set of n elements in an array and you have to find the largest and smallest element. अगर आप brute force approach मतलब non divide and conquer approach follow करेंगे, time complexity will be order of n. लेकिन number of element comparison जो हम determine किए थे, number of element comparisons, if you remember, using brute force method will be 2 into n minus 1. Yes. No. Number of inversions is a different problem, please. It is not max min. And using divide and conquer method, ये recurrence है. This is a recurrence that arises using divide and conquer method for finding maximum, minimum. This was asked in previous gate questions also. तो standard problems के recurrences आपको याद होना चाहिए. This recurrence will give you the number of element comparisons. तो इसका जब आप simplify करेंगे, मैंने gate crash course में simplify भी किया था. This will come out to as answer 3n by 2 minus 2 using divide and conquer method. Based on this formula 3n by 2 minus 2, there was a gate question for 1 mark as a NAT question, as a NAT. So remember this as so time complexity order of n. If you take order of this or if you take order of this, order of n. So space complexity will depend order of n, right? Workspace is all, this is input space, so we don't have to consider this. Only workspace order of log n for stack. अगर आप non divide and conquer method में करोगे तो space complexity directly order of 1 रहेगी, because I don't use stack in non divide and conquer method. ठीक है? So ये वीडियो आप डिटेल में देख सकते हो from the crash course with regard to finding max and min. Power of n element, that means if you want to find like a power n, power of n, we can use straightforward divide and conquer method by dividing this into the problems. I can write like a of n by 2 into a of n by 2. I can write this problem as a of n by 2
into a of n by 2, divide and conquer method. I'm dividing the problem into सब problems. एक बार आप सॉल्व कर लीजिए इसे, एक बार आप इसे सॉल्व कर लीजिए, उसका रिजल्ट रखिए, दूसरे बार आप सॉल्व मत कीजिए, जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए. So that is why its time complexity recurrence is just Tn by 2 plus 1. तो आप इसको सॉल्व अगर करोगे, we already know this is a standard template. So therefore the time complexity to multiply get power of an element is order of log n using divide and conquer method. कैसे? मैंने ऐसा बताया. This divide and conquer. I've divided the problem into sub problem, two sub problem. Next level it will become a of n by 4, a of n by 4, a of n by 8, a of n by 8 until it becomes small enough. That's it. The power of an element. So input space is some constant, workspace again log n because I need recursive stack. So time complexity and space complexity are both order of log n for power of an element. Yes, Prashant Prabhakar, you are right. So that is one problem. मर्ज सॉर्ट का बाइनरी सर्च, ये भी सबको पता है बाइनरी सर्च के बारे में. इसकी भी रिकरेंस जो आएगी ये रिकरेंस है. दिस वाज आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन वन ऑफ द पेपर, राइट. So its time complexity naturally is order of log n binary search with recursive method. और इसका best case average case जैसा मैंने कहा, best case is order of 1, average case is order of log n, worst case is order of log n. Input space we don't consider, only workspace order of 1. If it is non-recursive and if it is recursive then order of log n. If it is recursive implementation then it is order of log n. अगर recursive implementation हो रहा है तो हमें stack space लगेगी, non-recursive implementation अगर हो तो stack space नहीं लगेगी. That is why it is order of log n for recursive implementation of binary search. ये binary search का summarized discussion है. उसी तरह merge algorithm में, merge sort में भी काफी डिटेल में हम डिस्कस किए थे वह क्रैश कोर्स में. I would recommend those who have not seen, please see that my merge sort problem which I discussed in crash course basically. The important point to consider is, suppose if I'm having two list L1 with m elements and list L2 with n elements, number of comparisons needed to merge them to get a single sorted list we said is given by n plus m minus 1. ये हमेशा आपको याद रखना है. Number of comparisons, these number of comparisons, these number of comparisons needed to get a merge of these two lists is n plus m minus 1. So if you take the order of it, the worst case, best case, average case is order of m plus n. ये merge algorithm. Now using merge process we will basically arrive at merge sort technique. और merge sort technique का recurrence क्या होगा मुझे जल्दी लिख के बताइए बच्चों. What will be the recursive equation representing the time complexity for merge sort based on divide and conquer? What will be the time complexity recurrence for merge sort based on divide and conquer? Based on divide and conquer, what will be T of n? Of course it is written in the next slide, but here I wanted to ask you to check whether you know it or not. Come on boys and girls. What will be the time complexity for merge sort? Yes. No, Shifu Qadir, be careful. It is not plus C. 2 times T of n by 2 plus constant multiplied by n. This will be the recurrence. And if you solve it, if you solve this, this will be order of n log n. Omega of n log n. So therefore theta of n log n. Prashant Prabhakar, no, it is not correct. 2Tn by 2 plus n proportional to n. Yes, m plus n you can write. Order of n log n. Space complexity, S of n. I need an additional space, additional array, so therefore space complexity is order of n of merge sort. यही next slide में total description दिया गया है. देखिए आप, अगर out place हो या in place हो, total description है, आप देख सकते हो. Whatever I described earlier, same thing is in place. मतलब without using additional array, without additional array, that complexity will increase, and here with array the complexity will be less. ठीक है, ये एक, this is not needed, you can see. Now when you come to quick sort behave in best case, not average case. Average case का time complexity same रहेगा, right? Best case will arrive when the elements are unsorted, and worst case will happen when the elements are already sorted.
When the elements are already sorted, you will have worst case, and the time complexity will be nothing but n plus tn minus 1 plus c. So if you simplify, this will be order of n square. The worst case complexity of quicksort is order of n square, but here c is only written on the slide. No, that is not correct. What I am writing is correct. And the best case will happen when the pivot element get pivoted in the middle, so therefore the time complexity will be 2tn by 2 plus n, so therefore n log n. So finally what I wanted you to remember is that best case time complexity, average case time complexity of quicksort is order of n log n, and that happens when the element get pivoted in the middle of the list. And worst case will happen when the elements are already in sorted order, and that will happen when the elements are already in sorted order, and that will happen when the pivot get pivoted either the first place or the last place during every pass of partitioning. Every pass of partitioning. ये है. थोड़े questions ले लेंगे. चलिए इसके some questions on quicksort which are important from gate perspective. Come on, boys and girls, answer me. In quicksort, for sorting n elements, the smallest element is selected as pivot. So what will be the time complexity? Very interesting. What will be the time complexity? Smallest element is taken as pivot at every iteration. Very correct, very correct, very correct. Many people are saying order of n square because this corresponds to worst case. This corresponds to worst case. Very simple. Next, उसमें देखिए आप. इसका आंसर बताइए please. This was a gate question, I believe. थोड़ा modify करके पूछ रहा हूँ यहाँ पर. What will be the answer for this question? Median. Yes, come on, boys and girls, work out this question and tell me the answer. You know what is the meaning of median? Median means middle element of sorted list. The median of n elements can be found in order of n times. So that means the recurrence will become order of n for solving median plus order of n for partitioning plus 2tn by 2. This will become the recurrence for solving this problem. And if you solve it naturally, as you are saying, this will be order of n log n. Very correct. This is for solving median, this is for partitioning, and this is for two sub problems. मेरे ख्याल में next slide में दिया गया है detail में discussion. देखिए, this will be the time for median, this will be the swap for median with last element, and then the partitioning algorithm, and then the solving the two sub problems recursively. Same thing जो मैं describe किया. So therefore this is how you get the recurrence. चलिए और एक भी क्वेश्चन है मेरे ख्याल में. हाँ, ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एज होमवर्क. वेरी इंटरेस्टिंग. एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, एक बार पढ़ लीजिए. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. होमवर्क. इसका आंसर आप मुझे रेस्पॉन्ड कर सकते हो थ्रू सम वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ मी. Splits at every level of quicksort are in the proportion 1 minus alpha to alpha, where alpha lie between 0 to half. Look at this, which is a constant. Minimum depth of a leaf in the recursion tree is approximately dash. Four options are given. Four options are given. Homework है ये. Minimum depth. जब आप recursion tree से explode करोगे इसे, I have n at the root and alpha n. Next is 1 minus alpha n. जब आप कोई भी एक क्या कीजिए, आप अल्फा की एक वैल्यू लीजिए बिटवीन 1 and half. आप तो हाफ भी ले सकते हो या फिर लेस देन हाफ भी ले सकते हो. फिर उसके बाद आप रिकर्शन ट्री उतारिए. मिनिमम डेप्थ, टॉप लेवल मोस्ट डेप्थ कहां पर कंप्लीट होती है, यू हैव टू एक्सप्रेस दैट इन टर्म्स ऑफ एन. सो व्हाट विल बी दैट, राइट? व्हाट विल बी दैट? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सॉल्व दिस यूजिंग रिकर्शन ट्री. You will get the answer very interestingly. Recursion tree approach. Solve this question using recursion tree approach as a matter of exercise. It will be a very nice question. Okay, chaliye. Randomized quicksort algorithm. Selection of pivot element can be taken randomly. Uska best case, average case will be order of n log n, and worst case will be order of n square. Worst case again will happen when the element is getting pivoted either at the first place or last place. Either first place or last place. Randomized quicksort. Lekin most of the time we say that randomly it will not select the smallest element or the largest element. So by and large, most of the time complexity of randomized quicksort will be n log n, unless and until some special case, like if it get pivoted and the other. Last जो question आप solve कर सकते हो using what I say
For example, divide and conquer strategy is counting number of inversions in an array. What is an inversion? Can anybody write in the chat box and tell me what is an inversion? Come on, what is an inversion? What is an inversion in an array? मैं तो explain करूंगा आपको, लेकिन क्या कोई जानता है यहां पर क्लास में? I would like to see what is an inversion in an array. Come on, boys and girls. What is an inversion in an array? Anybody? No. It is not like that. Unknown. Yeah, I mean, implication आप बता रहे हो, जो कह रहे हो, yes. I will write the definition and explain to you the concept. Please follow. Let A 1 to n be an array of n elements. A1 to n be an array of n elements. Please observe. Let I and j be two indices. दो indices है array के, right? If the index value I is less than j and a of I is greater than a of j, if a of I is greater than a of j, then the pair ij is an inversion of the array, is an inversion of array A. बच्चों देखिए एक बार अच्छा, if I is less than j and a of I is greater than a of j, then the pair aij is called inversion of the array. For example, next slide में जाकर बताऊंगा आपको. यहां पर देखिए आप, एक array ले लेंगे हम, वन टू थ्री फोर फाइव. Tell me what are the inversions of this array? What are the inversions of this array in terms of indices? Can I say one is inversion with respect to 2? Yes, 1, 2 is inversion. 1 is less than 2, a of I is greater than 7. 1, 3 is inversion. Yes, 1, 3 is inversion. 1, 4 is inversion. 1, 5 is also inversion. Correct? ठीक है? Next. Any problem? Yes. This is an important property using in sorting. 2, 3 is inversion. 2, 4 is also inversion. 2, 5 is also inversion. Coming to 3. 3 index 3. 0 is less than, no. 0 with 3 I don't have any inversion. With 4, 5 is an inversion. Yes, 4, 5 is an inversion. So my dear boys and girls, good evening sir. Alak Pandey sir is in the here. He is wishing you all, right? Alak sir is here in the class. Is wishing you all the best. Okay, here, so let's continue. So this array has got, okay, my God, take, I don't know, please, I cannot say real or fake, so let us not bother. Let us bother about the class. Right. So this array has got how many inversions? Come on, revert back to class. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This array has got 8 inversions. ये बेसिस पर एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं. शिफू खादिर, प्लीज अंडरस्टैंड. प्रशांत प्रभाकर, हैव ए लुक हियर. लेट अस नॉट बॉदर. इन एन अरे हैविंग एन एलिमेंट्स, बच्चों आंसर कीजिए. इन एन अरे हैविंग एन एलिमेंट्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन्स and what is the minimum number of inversions that the array can have? Boys and girls, 2 questions पूछा हूं मैं. एक ये 2 भी क्वेश्चन गेट के हैं. What is the maximum and minimum number of inversion that an array can have of size n elements? Come on. Order of dash, मुझे order में बताइए. Order में बताइए. Arav, minimum. Arav is still here in the class, surprisingly. He got too enthusiastic. He's too enthusiastic and got too much interest in algorithms course. Very good. बच्चों बताइए, what is maximum? Count नहीं, मुझे order में बताइए. Order is how much? Order.
order of n square, and this is 0. This is 0. 0. But interestingly, when will it happen? Maximum will happen when the elements are already in decreasing order. When the elements in the array are decreasing order, देखिए आप 50, 20, 5, 0, -2. Decreasing order. When the elements are in increasing order, the number of elements like 5, 10, 12, 18, 25, increasing order. Number of inversions are 0. Number of inversions here with respect to 1, n-1. Right? So this will become like n into n-1 by 2. Order of n square. Very good. So ये मैं आपको पूरा concept दे दिया हूँ inversions का. So given an array with n elements, you can count how many inversions are there in the array using divide and conquer method. You can solve it. How you can find it. Hint is I cannot solve it here because that itself may take me 1 hour. You can solve it. You can solve this problem using divide and conquer method using merge sort. That is a hint. Using merge sort principle. आप same merge sort algorithm थोड़ा modify करके आप find कर सकते हो. That will be an interesting exercise. इसका complexity इसीलिए merge sort की complexity रहेगी which is order of n log n. Which is order of n log n. तो inversions का भी problem मैंने आपको कुछ हद तक अच्छा डिटेल में बता दिया है. ठीक है? यस, यू कैन ट्राई. यहां तक बता दिया मैं आपको व्हाट इज इन्वर्जन, मिनिमम मैक्सिमम, और कैसे किस स्ट्रैटेजी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी बताया. नॉट पार्टीशनिंग, मर्जिंग प्रोसेस से. ठीक है? ओके. उसी तरह एक क्विक सॉर्ट के पार्टीशनिंग प्रोसीजर का और एक एप्लीकेशन है जिसे हम बोलते हैं पार्टीशनिंग प्रोसीजर, जिसका वो काम है फाइंडिंग द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑन एन array in an array of size n element. That means in an array of n elements, you want to find kth smallest element, fifth smallest element, fourth smallest element, 10th smallest element, उस तरह kth smallest element. ये आप पार्टीशनिंग प्रोसीजर ऑफ क्विकसॉर्ट से कर सकते हो. इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी ऑर्डर ऑफ n यूजिंग पार्टीशनिंग प्रोसीजर. यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ. अगर आप ये डिटेल में देखना चाहते हो तो यू कैन सी दिस आइदर इन कॉमन टेक्स्ट बुक और इवन इन सहानी टेक्स्ट बुक. सहानी, you can see this using partitioning procedure. Very simple logic. Logic बहुत simple है. देखिए जब आप partitioning procedure apply करोगे then it is going to return some position of the pivot element. अगर आपका जो pivot element x है, it will return some this as some small mth smallest element, and you want to find k smallest element. तो जब m की वैल्यू रिटर्न आएगी आपको कंपेयर करना है इस k is less than m or k is equal to m or k is greater than m. If k is less than m मतलब आपको लेफ्ट पार्टीशन में सर्च करना है. If k is equal to m मतलब आपको रिजल्ट आ गया. If k is greater than m मतलब आपको राइट पार्टीशन में सर्च करना है. That's it. Very simple procedure. उस तरीके से आप ये कर सकते हो. ठीक है? So this is also a strategy. लास्ट प्रॉब्लम जो है वो स्ट्राजेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है. ये प्रॉब्लम भी मैंने क्रैश कोर्स में डिटेल में डिस्कस किया है. मैट्रिक्स एडिशन टेक ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन using divide and conquer and also school method, traditional method, school method is order of n cube. ये हमने प्रूफ किया. ठीक है? लेकिन स्ट्राजेंस का जो अप्रोच है टू reduce the time complexity, it has reduced it to order of n power 2.81 by reducing the number of multiplications from 8 to 7. Right? Am I teaching mathematics, Arav? This is algorithms also. Algorithms is nothing but mathematics. Algorithms is expression of mathematics as a program, as a tool for implementing your algorithms. Yes. So this is order of n cube. Order of n cube and Strazen's approach, order of n power 2.81. ये है complexity with regard to that. यहाँ पर आपको फिर से एक और एक cheat sheet दे रहा हूँ with regard to divide and conquer. देखिए काफी important problems है with regard to sorting, quick sort, merge sort, हीप सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट. उनकी बेसिक लॉजिक डिस्क्राइब की गई है. बेस्ट केस टाइम, एवरेज केस टाइम, वर्स्ट केस टाइम, इज इट स्टेबल और नॉट, इज इट इन प्लेस और नॉट, पूरा सॉर्टिंग का यहाँ पर चार्ट दिया गया है. आई मीन दिस विल ऑल्सो एक्ट लाइक ए रेफरेंस फॉर यू विथ रिगार्ड टू ऑल सॉर्टिंग टेक्निक. ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. अब सेकेंड डिजाइन स्ट्रैटेजी में आ जाएंगे हम, ग्रीडी मेथड.
Greedy method is a design method used for solving problems whose solutions are viewed as a result of making a set of decisions. मतलब जहां पर भी आपको a sequence of decisions make करना होगा, जब भी decisions लेना होगा, if you make the decisions in a stepwise manner, अगर आप stepwise manner में decisions लोगे, where at every step you apply the greedy property. Greedy property क्या है? Out of available options, greedily select that option which satisfies your objectivity. अगर आप ये करोगे, then you can get the solution. ठीक है, इसके कौन से एप्लीकेशंस आप सॉल्व कर सकते हो ग्रीडी मेथड के बेसिस पर, यहां पर मैं बता रहा हूं. लेकिन उससे पहले ये टर्मिनोलॉजी जो मैं क्रैश कोर्स में भी डिस्क्राइब किया था, एवरी प्रॉब्लम विल हैव कंस्ट्रेंट्स, इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स एंड एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट्स, वो बेसिस पर हम सोल्यूशन स्पेस डिफाइन करेंगे. देन दोज सॉल्यूशंस व्हिच सैटिस्फाई द इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स आर कॉल्ड फीजिबल सॉल्यूशंस. सम प्रॉब्लम विल हैव ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसे नैपसैक प्रॉब्लम है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम है, जहां पर आप कोई चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करोगे, या मैक्सिमाइज करोगे, हम उसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन. फिर जो भी फीजिबल सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा उसे हम बोलेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन. मतलब जो भी ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम है उसका हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, और जिस प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन ना होगा हम उसका सिर्फ फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. तो ये टर्मिनोलॉजी डिटेल में मैंने डिस्क्राइब किया है क्रैश कोर्स में, आप देख सकते हो. यहां पर सिर्फ आपको मैं एज अ रिवीजन बता रहा हूं. व्हाट आर दी एप्लीकेशंस, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस यहां पे लिखा हूं. नैपसैक प्रॉब्लम, या हम इसे बोलते हैं ग्रीडी नैपसैक. जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन JSD. हफमन कोडिंग विद ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, देखिए आप इसी का एप्लीकेशन है हफमन कोडिंग. मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, जिसे हम बोलते हैं डाइकेस्ट्राज एल्गोरिथम. इतने प्रॉब्लम्स है ग्रीडी के जिसे आप मास्टर करना चाहिए इफ यू रियली वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ गेट. ठीक है, मैंने क्रैश कोर्स में ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व किया है. 1.5 आवर लेक्चर के है, दैट्स व्हाई आई डिडंट वर्कड आउट मच इन क्रैश कोर्स, ओनली फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सो दैट लेटर ऑन फिर से आपको देखना हो, आप 1.5 या 2x से भी आप देखकर रिवाइज कर सकते हो इफ यू हैव नॉट सीन अर्लियर. क्योंकि अब यहां पर हम ज्यादा डिटेल में पूरे एक प्रॉब्लम 1 घंटे का भी हो सकता है, तो वी कैन नॉट डू ऑल द प्रॉब्लम्स. कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स यहां लूंगा ताकि आप देख सकते हो, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हो. इसमें बच्चों मैं आपको 2 चीजें बोलूंगा. आप फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट दिस इज वन प्रॉब्लम यू पुट हेवी फोकस ऑन, एंड स्पैनिंग ट्रीज. ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है फ्रॉम ग्रीडी मेथड एट एनी कॉस्ट. जैसा हमें पीवाईक्यूज में भी फोकस किया था मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री के क्वेश्चंस, पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू व्हाट यू से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस ऑन दैट. और प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन हफमन कोडिंग पर्टिकुलरली इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली यूजफुल. मैं एक क्वेश्चन यहां पे भी लूंगा आपके लिए, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहां पर लूंगा. प्लीज टेक दैट क्वेश्चन फर्स्ट. और मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर लूं JSD का. You are given a set of single CPU and a set of n jobs. Each job take a burst time of 1 unit, right? And every job has a deadline D and has a profit P. You need to select a subset of the jobs such that the jobs in the subset are all completable within the deadline, right? And give you maximum profit. अगर आप brute force approach से प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी 2 power n एक्सपोनेंशियल टाइम. लेकिन आप ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व करोगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी सिर्फ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर वर्स्ट केस में, और बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n log n होगी. इसका एल्गोरिथम अगर आप देखना चाह रहे हो, द एल्गोरिथम ऑफ दिस इज देयर इन द टेक्स्ट बुक ऑफ साहनी, क्योंकि ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में डिस्क्राइब नहीं है. साहनी टेक्स्ट बुक में आप देखना चाहते हो, लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. ठीक है, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइंस. मर्ज पैटर्न प्रॉब्लम भी शायद आपको पता हो. मर्ज पैटर्न प्रॉब्लम क्या है? गिवन 2 files, file 1 is just like merging process, file 1 having n records, file 2 having m records. Both are sorted files. We need to merge them to get a single file F which will have n plus m records, right? So these are called record movements. तो 2 files को जब आप merge करोगे तो यहां पर हम number of record movements determine कर रहे हैं. merge sort में we were finding number of comparisons. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Again I repeat,
मर्ज सॉर्ट में आप नंबर ऑफ कंपैरिजन डिटरमिन कर रहे हो, और ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न एल्गोरिथम में यू आर डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ रिकॉर्ड मूवमेंट्स, कितने रिकॉर्ड्स मूव हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड मूवमेंट्स आप पूरा ट्री बनाकर डिटरमिन कर सकते हो, और इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी ऑर्डर ऑफ n log n बेस्ड ऑन ऑप्टिमल मर्ज ट्री दैट यू गेट, ऑर्डर ऑफ n log n यूजिंग हीप इंप्लीमेंटेशन। यहां पर यही लिखा गया ऑर्डर ऑफ n log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री विल बी ऑर्डर ऑफ n। इसका एप्लीकेशन है हफमैन कोडिंग। वही प्रॉब्लम सबसे पहले मैं यहां पे लूंगा, स्पैनिंग ट्री के बारे में हम बाद में आएंगे। बच्चों मैं 2 मिनट 3 मिनट का आपको टाइम दूंगा, यू नीड टू वर्क आउट दिस क्वेश्चन, कम ऑन solve this question based on Huffman coding, just as a matter of practice. Come on, do it. I will not solve, you should solve it, and let me see your practice. Huffman coding. Up tak 4 to 5 times in previous papers of GATE, questions were asked based on Huffman coding. Boys and girls, please work out. Huffman coding पर अब तक previous GATE में 4 to 5 क्वेश्चंस आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पर्टिकुलरली इन दिस आई एम टेकिंग हफमैन कोडिंग प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। Go on, solve it. I hope you are doing it. 5 symbols of alphabets A, B, C, D with their following frequencies, probabilities. What is the compression ratio achieved using Huffman coding compared to fixed length encoding? Fixed length encoding में average number of bits calculate कीजिए, Huffman coding में average number of bits calculate कीजिए, दोनों का difference देखिए, percentage of saving निकालिए, that is what is being asked. Percentage saving is compression ratio. Come on, boys and girls. Average number of bits using fixed length encoding. Average, ये तो directly बोल सकते हैं हम. Average number of bits using fixed length encoding. Fixed length encoding. Fixed length encoding. कितना होगी? ये तो direct है. Come on, boys and girls. फिक्स लेंथ एनकोडिंग से कितना होगा बताइए प्लीज। फाइव एलिमेंट्स है, फिक्स लेंथ एनकोडिंग से हाउ मेनी बिट्स विल बी नीडेड? कम ऑन, शिफू कादिर, रोहित रॉय, जिम जोन्स, प्रशांत प्रभाकर, रोहित रॉय, I hope Arav is also there. Huffman coding used for error correction. Oh my God. Huffman encoding is not used for error detection and correction. आप कंफ्यूज हो रहे हो अर्पण पॉल बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड एल्गोरिथम्स। हैमिंग कोड इज डिफरेंट, हफमैन कोड इज डिफरेंट, ठीक है ना? आई होप आई एम करेक्ट। हैमिंग कोड इज यूज्ड इन error correction method in a computer networks, Hamming codes. Yeah, Huffman code, this is different. Huffman code is different, Hamming code is different. Tarun Patel, average number of bits using fixed length encoding will be how much? Using fixed length encoding will be how much? Average number of bits, fixed length encoding. Ravi Teja Kakarla, you are right. 3 bits. Jim Jones is also right, 3 bits. 3 बिट्स पर कैरेक्टर। देखिए अब 5 एलिमेंट्स है, टू एनकोड 5 एलिमेंट्स आई नीड 3 बिट्स। अब हफमैन कोडिंग से कितना होगा? कम ऑन, हफमैन कोडिंग से कितना होगा? आपको वर्कआउट करना होगा हफमैन कोडिंग से। हफमैन कोडिंग से कितना होगा? एवरेज नंबर ऑफ बिट्स। आपको क्या करना होगा? आपको ट्री डिराइव करना होगा, ठीक है ना? ट्री मैं खाली एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मैं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा, स्ट्रक्चर बना के आपको दे दूंगा, आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हो। तो 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लेंगे हम उनके फ्रीक्वेंसीज, ठीक है? सो स्मॉलेस्ट इज 0.1, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इज 0.15, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इज 0.2,
again 0.2 and then 0.35. ये है 0.1 B, 0.15 is E, this is C, this is D, this is A. तो हमें क्या करना है, हमें दो स्मॉलेस्ट को कंबाइन करना है, 0.1 एंड 0.15. तो ये बन जाएगा 0.25. ठीक है, ओके. तो फिर उसके बाद क्या होगा, 0.2 इधर आएगा लेफ्ट पर, ये 0.2 लीजिए या ये 0.2 लीजिए, ये दोनों को कंबाइन कर लीजिए, दिस इज सी, ये हम कंज्यूम कर लिए, ये हो गया 0.45. फिर उसके बाद देखिए आप 0.45 है, 0.2, 0.35, ये दोनों स्मॉलेस्ट है, ये दोनों को कंबाइन कर लेंगे, इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.55. फिर ये दोनों को वैल्यू कंबाइन कर लीजिए, की वैल्यू रूट की बन गई 1.0, लेफ्ट की वैल्यू 0, राइट की वैल्यू 1, लेफ्ट 0, राइट 1, लेफ्ट 0, राइट 1, दिस इज 0, दिस इज 1. हर एक कोड, राइट. एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर कैरेक्टर, एवरेज इज गिवन बाय सिग्मा DI QI, I इक्वल टू 1 to n. डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू मैसेज एंड QI इज इट्स प्रोबेबिलिटी. जैसा कि मैसेज A एट द डिस्टेंस ऑफ 2 into probability 0.35 plus B is at a distance of 1, 2, 3 into 0.1 plus C is here. So therefore it is 2 into 0.2 plus D is at a distance of 2 into 0.2 plus E is at a distance of 3 into 0.25, 3 into 0.15. ये वैल्यू कितनी है बच्चों, बोलिए मुझे. C and D will not be combined. Okay, have I made a mistake? Yeah, I think I made a mistake, correct. Yes. 0.2, yes, I think I made a mistake here. 0.2, 0.25 are not combined, 0.2, 0.2, oh, I'm sorry. So I will have to draw it again. यहाँ पर उतार लेंगे. देखिए आप ऐसे ही मिस्टेक करेंगे एग्जाम में. तो 0.1, 0.15, 0.2, 0.2, 0.35. Quickly we can draw, no problem. These two are smallest. So 0.25, 0.2, 0.2, 0.4. तो 0.35 हम यहाँ पर ला लेंगे. This is B. 0.15 is E. 0.2 is C. This is D. Now 0.35 is E. Sorry, A. So A, B, C, D, E. ठीक है. 0.35 यहाँ पे ला लिए हम. This is gone. So now 0.25 and 0.35 are combined. So therefore this is 0.55. ठीक है. So then why I'm not getting, okay, fine. So 0.95, is it 95? I think okay, यहाँ पे mistake हो रही है. So this 0.6, sorry. 0.25 पर 0.35, 0.6. तो 0.4 को आप लेफ्ट पे लाइए, 0.6 को राइट हैंड साइड पे लाइए. थोड़ा सा मैं इसे हटा रहा हूँ, राइट, सो दैट आई कैन गेट माई ट्री. 0.4 and then here I have 0.2 and 0.2. Then I am going to combine these two. So therefore this is 1.0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Okay? So this we can remove now finally. So I have all the messages A, B, this is C, this is D and E. So your equation will change. So what will you get? A, message A is at a distance of 2 into 0.35.
plus B 1 2 3 3 into 0.25. Sorry, this is not 0.25. B 3 into 0.1 plus C 2 into 0.2 plus D 2 into 0.2 plus E 3 into 0.15. ये सही है. What is this value, boys? 2.65 or 2.25? Many people are telling different answers. So 2.65. Let us say it is 2.65. I'm assuming what you are saying is correct. It's 2.65, 2.25, 2.3. This value. So you take the difference, divided by 3, you get the percentage. Is it 2.3? Okay. I'm not doing the sum. I hope you are doing it. So finally, what is this sum should I take? Jim Jones? Some people are again saying 2.65 and 2.3. Please tell me what is the correct answer. Yes, this is the formula for average number of bits per character. Huffman code, weighted average. This is called weighted average. This is how you should do it. Come on. Somebody please tell me what is the correct answer for this expansion. 2 point how much? Jim Jones? 2.65? This is summing to 2.65 or what? Check it please. The tree I think is correct now. 0.1, 0.15 are combined, 0.25. Then 0.2, 0.2 are combined, 0.4. Right? I have then 0.25 and 0.35 are combined. So therefore 0.6. Then 0.4, 0.61. Correct. So what is the answer for this? Is this 2.65? Okay, 2.65. So 2.65 minus 3. 3 minus 2.65. 0.35. So that is the percentage saving that we are going to get, 0.35. Correct. So I think that is almost 25%. That is almost 25%. So the answer for that will be 25%. Yes. So that is the way. Please practice this problem. This is very important. Huffman coding. ठीक है? ये तो एक simple आप graph theory में पढ़े होंगे कि that the number of edges in a simple graph, right? Maximum number of edges in a simple graph will be v into v minus 1 by 2 for a undirected graph, and for directed it will v into v minus 1, which is order of v square. So therefore E is always order of v square, log E is order of log v. ये एक बहुत important property है जो minimum cost spanning tree में use की जाती है. Ravi Teja is saying 2.25. Why conflict? Should I do it again on my own? Should I take 2.65 or 2.25? 2.25, ठीक है. That's what I'm relying on you. Whatever you're saying, I'm writing. 2.25. Okay, 2.25, correct. ठीक है. So 0.75. 0.75 is the saving. On an average, you are saying 0.75 bits per character. Compression ratio, therefore 25%. ठीक है. So this is the property of maximum number of edges and maximum number of edges in a graph. So E is order of v square and log E is order of log v from this property. ये बहुत ज़्यादा important property है with regard to edges and vertices for minimum cost spanning tree. ठीक है. The representation of graph, I hope in data structures you might have studied in detail. I don't want to go into it. Just यहाँ पर describe कर रहा हूँ. You have adjacency matrix and adjacency list. तो अगर आपकी graph, if your graph is being represented by adjacency matrix, its time complexity generally is bounded by order of n square. ये important observation है जो आपको remember करना है. And on the other hand, if it is being represented by adjacency list, its time complexity is minimum bounded by order of n plus e, where n is the number of vertices and e is the number of edges. ये एक important property याद रखिए हमेशा, which will be useful for this. और dense graph और sparse graph के बारे में भी आपने पढ़ा होगा. Sparse graph मतलब it has less number of edges. Dense graph means it has more number of edges. Density of the number of edges are more. तो अगर density more है, then you should go for matrix representation. ये भी एक important property है.
and if the graph is sparse, then you should go for list representation. So generally ये पूछा जाता है कि when should you use list representation and when should you use matrix representation. So if the graph is dense graph, go for matrix. If the graph is sparse graph, then you go for adjacency list representation. So that is another important point you have to remember. ये complexities दी गई है, finding the degree of vertex, finding total number of edges, finding two vertices that are adjacent or not, and then this is the matrix and list representation time complexities, which I told just now. It is given in the form of it. So spanning tree के बारे में already you know it. What is a spanning tree? Properties of spanning tree, right? Two important concepts are there. Yes, 2.25 is correct. I have taken that, Prashant, no problem. So 0.75 bits per character is saved, right? So therefore that is the percentage saving, or you can call 25% as the compression ratio. That is correct. So a subgraph T of V comma E, T comma V of E dash of G is a spanning tree where E dash is a subset of it only if T is a tree. Tree ka property hai, it should cover all the vertices. That means a graph having n vertices should have n minus 1 edges. Every spanning tree having n vertices will have n minus 1 edges taken from graph. Total number of edges that must be removed from the graph. Suppose if the graph has V comma E is the vertices and edges, where I say number of vertices are n, number of edges are E, then tell me how many edges are removed from the graph. Edges removed from the graph to get a spanning tree. What is the answer? How many edges must be removed from the graph to get a spanning tree? If the graph has n vertices and E edges, come on boys and girls, answer this. This was gate 1 mark question. Graph has n vertices and E edges. No, Shifu Khadir, be careful. Graph, listen to my question carefully. Graph has got n vertices and E edges. How many edges must be removed from the graph to get a spanning tree? The number of edges that must be removed from the graph has total E edges. Spanning tree has n minus 1 edges. So therefore, E minus n plus 1. The number of edges that must be removed from the graph is E minus n plus 1. Correct. Many people are telling correctly now. Right? There are two algorithms for solving the problem of spanning tree. You know it. One is Prim's algorithm. The other is Kruskal's algorithm. Prim's and Kruskal's algorithm. Prim's and Kruskal's algorithm. Prim's algorithm without using heap complexity is order of n square. और अगर आप heap use करोगे Prim's algorithm में, complexity will become n plus e log n. अभी slide में भी बताया जाएगा. और complexity of Kruskal's method, Kruskal's algorithm will become order of e log e. Prim's method always maintain tree structure. Kruskal's method need not maintain tree structure. ये भी problem मैं काफी describe किया हूँ, काफी अच्छी तरीके से discuss किए हैं हम. In the crash course, you can watch that video. That is what I said. You have to remember this complexity. Order of n plus e log n. Yeah, Kruskal's algorithm. See, if I take any graph and if I want to construct a spanning tree, like I take a very simple approach. Some graph like this: A, B, C, D, E, 5, 8, 3, 2, 6, 11. I want to make a spanning tree using Prim's and Kruskal's. दोनों recap कर दूंगा मैं यहाँ पर. बच्चों देख लीजिए एक बार. Everybody please follow. Recap. Prim's method. कैसे होगा construction? Prim's. और यहाँ पर Kruskal's. Prim's और Kruskal's. पहले आप skeleton ले लोगे ग्राफ का. Mark the vertices A, B, C, D, E. ठीक है? Prim's method starts, you can start with edge having the least cost because it's greedy approach. Edge having least cost is 2 D to C. So I add that. The next edge जो आप add करोगे Prim's method में should be connected from the vertices included so far. जो भी vertices आए हैं included so far, you select the next edge connected from these two vertices. देखिए आप क्या है possibilities? I have basically DC ना. So therefore either I can add 3 or I can add 8, I can add 6, I can add 11, right? Because either it should be connected from D or it should be connected from C. That edge having least cost. So कौन सा edge है? DA, least cost, 3. Next edge should be again connected either from A or from D or from C having least cost. So what is the option? 5 or 6 or 11
or 8. 5 is less, so therefore I can add 5. उसी तरह आप कंटिन्यू करते जाएंगे until you add 3 edges. Here graph has 5 vertices, 4 edges. Next I cannot add 8, so it has to be either 6 or 11. So least is 6. So therefore this is using Prim's method. Prim's method always maintain connectivity. Kruskal's method need not maintain connectivity, connected structure property. अब यहाँ पर क्रिस्कल से अप्लाई करेंगे हम. क्रिस्कल्स के लिए बेस्ट पॉसिबल अप्रोच मैं जनरली स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि यू मेंटेन द एज कॉस्ट इन लीस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर 3, 5, 6, सॉरी 2 भी है, 2, 3, 5, 6, 8, 11. Delete the least cost edge. Delete the least cost edge. This is A, this is B, this is C, this is D, this is E. Delete the least cost edge. Least cost edge is DC with the cost value 2. Next least cost edge 3. Can we add without cycle? Yes, we can add without cycle. Next, delete the next least cost edge 5. Can we add it? Yes, because it does not lead to a cycle. 6. Can we add it? Yes, it does not lead to a cycle. We add. We have completed the construction. This is Kruskal's method. The time complexity of Prim's method without heap is n square. With heap is it is n plus e. Remember, n plus e log n. Kruskal's method is order of e log e, where n is number of vertices, e is number of edges. ये आप हमेशा इतना याद रख लीजिए. प्रॉपर्टीज याद रख लीजिए. You can solve any question on spanning tree. आप PYQs जो मेरा वीडियो है आप वो देख सकते हो, और you can even check at crash course some problems on spanning trees. ठीक है. उसी तरह अब आ जाएंगे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ. दो एल्गोरिथम्स है, डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम. दिस इज बेस्ड ऑन ग्रीडी मेथड, और द वर्किंग ऑफ दिस इज एग्जैक्टली लाइक प्रिम्स मेथड. इसकी जो वर्किंग है इट इज मोर और लेस वर्क्स लाइक प्रिम्स मेथड. और इसका एक प्रॉब्लम मैं क्रैश कोर्स में डिस्कस किया हूं, गेट क्वेश्चन, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट. ओके, सो इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मोर और लेस is like Prim's method, order of e log e, right? Or using adjacency list and unsorted array, you can say order of v square like that. And Bellman-Ford algorithm, same problem you can solve, but this is using dynamic programming. You have to remember this, using dynamic programming. Dynamic programming. The time complexity is order of e into v. मतलब हमारे कन्वेंशन से आप देखोगे order of n into e, number of vertices multiplied by number of edges. That is the difference. What is single source shortest path problem? Given a graph having n vertices, you want to find the shortest path from a single source to all other remaining vertices. From a single source to all other remaining vertices. That is what you want to find. So that can be done by greedy approach, or that can be solved using dynamic programming approach. So this is end of greedy method. So the next or the last design strategy is dynamic programming. Before I start, I would like to again ask you, what are, first point, what are the important elements of dynamic programming? Question 1. Elements. A brief discussion I will make. Elements of dynamic programming. Come on, what will you say? Tell me the answer in the chat box. What are the important elements of dynamic programming? Come on, boys and girls. Yes. There are two properties. There are two elements, two properties, or you can even say properties. You can even say properties. There are two properties or two elements of dynamic programming. One is optimal substructure property. Optimal substructure property. Second is overlapping subproblems. Overlapping subproblems. इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे तरीके से दिया है in my crash course. You can check by taking example of our famous problem Fibonacci. कोई भी टेक्स्ट बुक आप लीजिए डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए, they will start their discussion with a question on Fibonacci numbers or Fibonacci number, determining n Fibonacci number. You can solve it without dynamic programming and with dynamic programming, right? Fibonacci numbers. Like for example, f of n is equal to fib of n minus 1 plus fib of n minus 2.
Larger problem is expressed in terms of smaller problem. That property is called optimal substructure property, with the condition that fib of 0 is equal to 0, fib of 1 is equal to 1, or fib of n is equal to n for n less than or equal to 1. This is the condition. So if we calculate fib of 7, for example, I'm trying to show you the meaning of what do you call overlapping sub problems का अगर आपको meaning देखना हो, so suppose if you want to calculate fib of 5, fib of 5 recursive will be computed in terms of fib of 3 and fib of 4, right? Fib of 3 will be computed in terms of fib of 2 and fib of 1. Fib of 2 will be computed in terms of fib of 1 and fib of 0. Fib of 4 will be computed in terms of fib of 3 and fib of 2. Fib of 3 again will be computed in terms of fib of 2 and fib of 1, right? And fib of 2 will be computed in terms of fib of 1 and fib of 0. Fib of 2 again will be computed in terms of fib of 1 and fib of 0, right? अगर आप इस तरीके से मतलब डायरेक्ट रिकर्शन से आप करोगे, almost you can estimate the number of sub problems as order of 2 power n. That is why I say brute force or without dynamic programming. The time complexity we proved in crash course also as order of 2 power n, right? But if you see the meaning of sub problems here, what is happening here, that fib of 3 is computed how many times? Fib of 3 is computed here and computed here also. This is called overlapping sub problems. Fib of 2 first time may be computed here, again it is computed here. So if I don't use the technique of tabulating the result, then I am making my computation repeatedly again and again and wasting my time and wasting the space. So therefore, we can use this when we have overlapping sub problems. We can always think of applying dynamic programming. So there are two ways of applying dynamic programming. There are two types of dynamic programming. One is top down and the other is bottom up. Top down approach of dynamic programming is known as dash. Come on, answer me in the chat box, boys and girls. What is top down approach of dynamic programming known as? What is top down? Memoization. Excellent. This approach is called memoization. But generally memoization also is expressed recursively. So therefore this may also use recursion stack. So this may have a complexity on space. Bottom up approach is generally called tabulation method. Fibonacci का देखिए आप tabulation method, right? And generally this does not require space, you just not require a normal table. So this will be expressed generally iteratively, not recursively, iteratively. Iterative approach, bottom up approach. Most of the time we use this iterative approach, including Fibonacci. So generally most of the time by default you can say bottom up approach, non-memoization technique, non-recursive approach is used for solving problems of dynamic programming. The list of problems which you can focus from the gate exam perspective here I have described, right? Terminology remain the same. I don't want to go into that. It remains the same. The list of problems which you can generally solve from gate exam perspective which are important, I would say Fibonacci numbers, LCS, longest common subsequence, matrix chain product MCP, बहुत important problems है ये दोनों. फिर उसके बाद 0-1 knapsack and sum of subsets, SOS, sum of subsets. ये problems आप focus कीजिए from the perspective of dynamic programming from examination, keeping in view of examination point. Okay, so these problems are important. Some of them I have discussed in my crash course video. You can go through it what each of these problems is, because each problem is a lengthy problem, right? We cannot describe the whole problem in this crash course or in this revision course as such. एक क्वेश्चन है मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इसका आंसर मुझे बताइए प्लीज. I discussed this in the crash course I believe, but now you can solve it. Come on. What is the answer for this question? Simple question. I'm sure you can do it. Yes, very simple. Time complexity of Fibonacci series by using dynamic programming and without using dynamic programming are respectively. So therefore answer is a order of 2 power n and order of n. हर एक का time complexity remember कीजिए, right?
Yes, traveling salesperson is also an important problem. The characteristic of traveling salesperson problem is that what you have to remember from gate exam perspective is traveling salesperson problem is one problem, which is, if you see from the perspective of TOC, it is an NP complete problem. It is an NP complete problem. What does that mean, please? चलिए थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर with regard to traveling salesperson problem, which is solved using dynamic programming. It is an NP complete problem. मतलब क्या है इसका? कोई मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएगा. What does that mean? What does that mean? No. Absolutely. Ayush or all people, don't remember any algorithm, don't study any algorithm for, except remember time complexities of all. LCS, sum of subsets, इसके टाइम का, इसके algorithms आप बहुत simple derive कर सकते हो. But don't try to remember any algorithm. Just remember two things: recurrences of dynamic programming problems, number one. Number two, time and space complexities. ये दोनों आप remember कीजिए. That will be more than sufficient enough from examination perspective. ये दोनों important है. Yes. What does that mean? NP complete का मतलब क्या है? Traveling salesperson problem is an NP complete problem. Means, so far, boys and girls, please remember, it means that so far, आज तक, अभी तक, nobody has been able to develop a polynomial time algorithm for TSP on von Neumann architecture. मैं parallel computer की बात नहीं कर रहा हूं. Parallel machines पे you can do it. Multi processor architecture पर आप कर सकते हो. As on today, nobody has been able to solve traveling salesperson problem in polynomial time. The best possible time that you have in the literature is exponential time. Its complexity is order of n square into 2 power n. Traveling salesperson, order of n square into 2 power n. आज तक कोई भी polynomial time में traveling salesperson problem को solve नहीं किया है. That's why this problem belongs to the class of NP complete. NP complete का मतलब ये है, it is NP hard and it belongs to NP. It belongs to NP. Belongs to NP का मतलब it has a non-deterministic polynomial time algorithm. Non-deterministic, not deterministic. Non-deterministic polynomial time algorithm. It is NP hard. मतलब यह है कि all problems which are in NP are reducible to traveling salesperson. It is NP hard problem. Or from Cook's theorem, you can say that satisfiability problem reduces to traveling salesperson. Cook's theorem. From Cook's theorem, it implies satisfiability problem, SAT problem जो आपने पढ़ा होगा discrete mathematics और TOC में, satisfiability problem reduces to traveling salesperson problem. So therefore, traveling salesperson problem is NP hard and it belongs to the class of NP. So therefore, it is NP complete. So therefore, it means so far it doesn't have any polynomial time algorithm. What is the best known possible algorithm for traveling salesperson is n square 2 power n. That is the meaning. That is what you should remember. गेट एग्जाम के लिए इतना आप रिमेंबर कर लीजिए, काफी है. कॉम्प्लेक्सिटी थियरी फ्रॉम टीओसी, जो मैं आप चाह रहा हूं, आप कॉम्प्लेक्सिटी थियरी फ्रॉम टीओसी व्हाट यू रिमेंबर, एक चार्ट दे दूंगा, आप रिमेंबर कर लीजिए. प्रॉब्लम्स इन द लिटरेचर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स: डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल. Decidable and undecidable. Decidable are classified into two types: tractable and intractable. Right? Or maybe, yeah, tractable means they have deterministic polynomial time algorithm. Intractable means they have deterministic exponential time algorithm. That's why they are intractable. Deterministic exponential time or non-deterministic polynomial time. बहुत important chart आपको दे रहा हूं बच्चों, you can always keep it in mind. Undecidable means no algorithm exists, unsolvable. Example: halting problem of Turing machine.
That is the classification. Generating recursive functions, correct. So traveling cell, most of the problems of divide and conquer, यहाँ पे भी लिख रहा हूं, most of the problems of divide and conquer, greedy method, they are tractable. Sorting problems, searching problems, they are tractable. Problems like traveling salesperson, 01 knapsack, ठीक है, graph coloring, Hamiltonian cycle, they are all intractable. They are all intractable. तो ये लिस्ट आपको मालूम होना चाहिए. What is tractable, what is intractable, what is decidable, what is undecidable, examples of this. And now after this, what you should have is, you should know or you should be knowledgeable what is Cook's theorem. What does Cook's theorem say? When will be P equal to NP? When? You should know that. And after that, you should know what is P, what is NP. You should know what is NP hard and NP complete. This relation can be shown by means of a simple Venn diagram. By means of a simple Venn diagram. Another one I will show. This is the class of P, this is the class of NP, this is the class of NP hard. And this part I will show with different ink. This part, intersection, is NP complete. The discussion started from the problem of traveling salesperson, so I have to land up to here. ये आप हमेशा याद रखिए. P is a subset of NP. What is known so far is P is a subset of NP. What is not known, whether P is equal to NP or P is not equal to NP, that is Cook's theorem. ठीक है? So this is a class of P is a subset of NP. NP complete class, because every NP complete is NP and NP hard, but every NP hard is not NP complete. So that means there are some problems in NP hard. There are some problems in NP hard which are not NP complete. Halting problem is one. So in this space, halting problem of Turing machine lies. That is the meaning of it. ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ेंगे. तो अब मैं इसमें, when I don't want to go into much of these details, important problems के highlights मैं यहाँ पे लिखा हूँ, right? With regard to longest common subsequence, as I said. So what is a substring, what is a subsequence, and I have in detail discussed the LCS problem in the crash video. Please watch it. दो methods से मैं solve किया हूँ in detail. Those who have not seen, please do see it. half an hour में आप complete कर सकते हो. Just half an hour. और अगर आप 1.5 स्पीड और 2x की स्पीड से देखोगे तो और जल्दी कंप्लीट कर सकते हो. Please watch my video with regard to LCS problem from the crash course videos. That very detailed we have done. Even the time complexity also we have derived there. So time complexity of LCS problem of two strings having length of n and m is proved to be order of n into m. Its space requirement is also order of n into m, because जो size है टेबल का वो भी order of n into m रहेगा. तो बोलने का मतलब ये है कि हर डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम काफ़ी लंबे टाइम लेगा एक्सप्लेन करने के लिए. तो उसका प्रोसीजर आप फाइंड आउट कीजिए, उसका रिकरेंस रिमेंबर कीजिए और उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिटरमिन कीजिए. गेट एग्जाम के लिए इतना ही सफिशिएंट है विथ रिगार्ड टू ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग. ठीक है? तो एप्लीकेशंस ऑफ एलसीएस ये भी मैंने डिस्कस किया. एल्गोरिथम भी यहाँ पर दिया गया है आपके लिए, आप बाद में इसको देख सकते हो. To prove that the time complexity is order of n, यहाँ से आप prove कर सकते हो. From this it is nothing but order of n into m. Two nested loops है 0 to n minus 1, 0 to m minus 1. So based on that you can get it like order of n into m. ठीक है? तो यही है, derive भी किए हैं.
उसी तरह मैट्रिक्स चेन प्रोडक्ट या मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन अगर आप ब्रूट फोर्स से करोगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैटलॉन नंबर, नंबर ऑफ पैरेंथेसिस, कैटलॉन नंबर। और कैटलॉन नंबर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ब्रूट फोर्स से 2 पावर n, मतलब इफ यू सॉल्व मैट्रिक्स चेन प्रोडक्ट, right, if you solve matrix sub product, yes, welcome Mr. Chandan Jha, okay, Chandan Jha at 11:23 is also watching the video, my goodness. Okay, so if you solve it using catalan number, I mean brute force approach, the time complexity will be exponential, that is what I am trying to say, and space complexity will be order of n for the brute force approach. So if you solve this problem using dynamic programming principle with bottom-up approach, tabulation method, right, then the time complexity can be reduced down to just order of n cube, where n is what? Number of matrices in the chain. N is equal to number of matrices in the chain. So we are reducing the complexity from exponential to polynomial time. That is what I am trying to say. Exponential to polynomial time. So that is the advantage of the applying the principle of dynamic programming. The matrix chain product is also a problem from where a lot of numericals have been asked, right? Now a lot of numericals. And in my crash video, I have solved the problem using recursion tree method. Like for example, if I have 3 matrices, A1, A2, A3, how can we solve it using recursion tree method? I can have 2 points of split, point split about position 1, split about position 2. If I am splitting about position 1, then I will get the chain as A1 into A2 into A3. Or if I split about matrix 2, then I will get like A1, A2 about A3, right? So 2 possibilities. So you solve any of these 2, I mean, you multiply these 2, you multiply these 2, and again multiply the product with A1 or multiply the product with A3, you get the answer. So this approach you can follow, and you can get the total number of multiplications. And equally you can remember what I said is the recursive equation for solving this problem. So time complexity and yes. Thank you, Mr. Chandan Jha. I am also a big fan of yours. I have seen your classes on YouTube Get Wallah channel. You are also an excellent and marvelous teacher. Thanks for joining in this session, and high respect from my side also. Thanks. Chaliye. Yeah, somebody is asking 2 years gap for GATE exam matters for IIT placement. Doesn't matter. In fact, many companies prefer having industry experience if you do MTech after a period of a couple of years, right? Okay. Next, matrix chain product algorithm ka complexity main abhi bataya. It is order of n cube, and if you go with full brute force, order of 2 power n or maybe order of n power n, you can take. The next problem is 0-1 knapsack. Binary knapsack bhi aap bolte hain ise. Binary knapsack. You cannot solve binary knapsack using greedy method. I have proved that. In the crash video. You can check by one of the problems that we have solved. So without dynamic programming, it will be exponential time, and with dynamic programming, it may become linear time, provided the value of q is small, where p is the number of objects and q is the size of knapsack capacity. If knapsack capacity become very large, then again this will reduce down to exponential complexity. 0-1 knapsack. The last problem जो है, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, it is with regard to sum of subsets. एक problem, I mean, just a statement define करेंगे हम. We will define a statement with regard to sum of subsets. What is SOS problem? Sum of subsets. Given n elements and an integer m, and an integer m. What are the subsets of n elements that sum to m? Like for example, if I take 5 elements in an array, something like this, and the number of this m is, for example, 11.
What are the subsets of this? What are the subsets of this that sum to lem? Like for example, you can take one subset is 8, 3, another subset is for example 7, 4, and so on. Sum of subsets that sum to m. So if you solve this problem using brute force, the complexity will become order of 2 power n. Order of 2 power n. Why? Because the number of subsets with all n elements will be 2 power n, so you have to explore in a brute force all 2 power n possibilities, so complexity will become order of 2 power n. But if you solve it using dynamic programming, जो gate में पूछा गया था, right? Tabulation method is very simple, very easy. If you solve it, the complexity will become again order of n into m, provided the value of m is small. But if m is again very large, then it may become exponential. So that is, the algorithm is also given here for sum of subsets. So based on that, same thing it is given here, or it will become order of n plus m. It will become exponential if m is equal to 2 power n. That is what I said just now. So that is what I have with regard to this. But the last part which I would like to tell you is with regard to the topic on graph problems. एक brief आपको overview दूंगा. First point I would like to tell everybody, because this is a topic which overlaps in 3 subjects. It overlaps in discrete mathematics, it overlaps in data structures, and it is also there in algorithms. And I'm very sure you have already covered in discrete math graph theory, and in data structures you have studied about graph traversals. From algorithmic perspective, we generally talk about graph techniques and applications, plus applications. In data structures, I'm very sure Pankaj Sharma, who is an excellent teacher of data structures, he has already told you about depth first search, breadth first search. लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, क्रैश कोर्स में मैंने एक फुल वीडियो ऑलमोस्ट 1 hour 45 minutes का डिस्कस किया है ग्राफ्स टेक्निक्स के ऊपर. I would appreciate if you have not watched, please do watch. First ये आप watch कीजिए ग्राफ टेक्निक्स from YouTube channel. 1.5 hour का, where I have talked about in depth with regard to depth first search and in breadth with regard to breadth first search by giving several applications. I have covered depth first search for the following: undirected connected graph. ये डिटेल्स आप दूसरे मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स में कवर नहीं किया जाएगा, यहां पर हमने कवर किया. अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड डिसजॉइंट ग्राफ्स, ठीक है. फिर उसके बाद डायरेक्टेड ग्राफ, फिर उसके बाद डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. इतने traversals, and that too, all these traversals we have covered with regard to a framework. काय का framework था? Two things in the framework. One is discovery and finishing times. Many questions were asked in earlier papers based on this. Discovery and finishing times. And second is the concept of e-node, live node, dead node. And thirdly, when I say directed graphs, the concept of 3 types of edges. Right? Concept of 3 types of edges: tree edge, forward edge, back edge. फिर इसके बाद मैंने डेप्थ फर्स्ट सर्च से टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे डिटरमिन करोगे आप, ये भी डिस्कस किया है. प्लीज वॉच दैट वीडियो इफ यू हैव नॉट वॉच. इफ यू हैव वॉच, वेरी वेरी गुड, आपको ये सब आ जाएगा. और इसके कुछ एप्लीकेशंस भी मैंने देखा है, राइट? आप जरूर देखिए तरुण पाटिल. प्लीज, माय रिक्वेस्ट इज, दोज हु हैव नॉट वॉच, प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑफ ग्राफ टेक्निक्स ऑफ माइन इन द क्रैश कोर्स सेक्शन. राइट, 1.5 hour का वीडियो है. अगर आप उसको 1.5 या 2 से कर लोगे, you will have extreme grip on all these topics, and all these topics I have covered with keeping in view of gate questions. और कुछ applications भी specially जो मैं discuss किया हूँ applications like strongly connected components.
स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। पर्टिकुलरली कई एग्जांपल्स लेके मैं डिस्कस किया हूं, राइट? सो डिटरमिन दैट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी मैं काफी डिटेल में डिस्कस किया हूं, प्लीज हैव अ लुक एट इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा वन मोर ओवरलैपिंग टॉपिक जो मैं सेपरेटली एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हूं, वो है हीप एल्गोरिथम्स। हीप इज अ टॉपिक विच कम्स इन डेटा स्ट्रक्चर्स आल्सो, एंड फ्रॉम एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव मैंने डिस्कस किया हूं particularly methods of creating heap with their time complexities. The insertion method, heapify method. And then I have talked about methods like insert procedure, delete procedure, and then increase key, decrease key, modify key operations, how you can do it, and then some interesting problems also we solved. So if possible you watch heap algorithm, but compulsory you watch graph algorithms. So this is what I basically expect to be covered in this session. I actually planned for 2.5 hours to 3 hours, but it went on 3.5 hours, no problem. But this was what I was having in my mind to prepare you for the revision course in algorithms. So do prepare. Yeah, Ankit Agarwal, what is your doubt? Please tell me. Yeah, tell me, Ankit. Ankit, बोलिए आपका क्या doubt है? Of time in example 4, F5 and F10 should be there now. What can you write? What is, because I have to scroll through so many slides. Right now I'm in 118 slide. I don't know where is example 4. F15 and F10. You write the functions. What is F15 and F10? Write down what is F15 and F10 here. Ankit. No, what are the functions? I don't remember the functions. एक बार बोलिए आप मुझे functions क्या है, यही हम decide कर लेंगे whether they are equal or not. F5 and F10. F15 F10. What is F15 and F10? अगर functions आप यहाँ लिखोगे तो अभी हम देख कर decide कर लेंगे कि is it right or wrong, equal or not. तो बच्चों आपको मैं फिर से एक बार कर रहा हूं कि एक जो टॉपिक है सेट्स एंड ऑपरेशंस. अंकित, यू राइट द फंक्शंस मीनवाइल. सेट्स एंड ऑपरेशंस, ये भी एक टॉपिक है. आप प्लीज एक बार देखिए. या F5 इज n स्क्वायर. ओके, F5 इज इक्वल टू n स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट F10 क्या है? What is F10? ISC के लिए you target 60 marks please. N square log n. How can the other function F10 n square log n? How can both be same please? They cannot be same, na Ankit. N square log n definitely is greater than n square. F10 is greater than n square. बहुत simple है ये. F5. N square log n is greater by a factor of log n. Log n is a positive function. Log n की इंक्रीज होगी वैल्यू. ठीक है. यस, 10 इज ग्रेटर देन 5. नेचुरली n स्क्वायर log n इज ग्रेटर देन n स्क्वायर. ठीक है. तो बच्चों मैं ये कह रहा था लास्ट पॉइंट आपको बताने के लिए, सेट्स एंड ऑपरेशंस एक बार पढ़ लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो आपको जरूर हेल्प होगी टू स्पेशली फॉर प्रिम्स एंड क्रस्कल्स एल्गोरिथम. अगर आप ना भी पढ़ो, बिकॉज ऑलरेडी 6 डेज है, ज्यादा कोई टेंशन मत लीजिए. आप जितना अब तक पढ़े हो उतने पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए. राइट, डोंट वेंचर न्यू टॉपिक्स इन द सब्जेक्ट. जो भी सब्जेक्ट पढ़े हो उन्हीं का क्विक रिवीजन कीजिए. स्पेशली दिस पीडीएफ जो हम प्रिपेयर किए हैं लास्ट में, उन्हीं को फॉलो कीजिए प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए. दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट इनफ. दैट विल बी एक्सेलेंटली सफिशिएंट इनफ. दैट्स व्हाट आई वुड से. ठीक है. तो दैट्स व्हाट फ्रॉम माय साइड बॉयज एंड गर्ल्स. मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कोई नेगेटिविटी मत लाइए अपने माइंड में. राइट, you try to focus on your preparation and preparation. Don't ponder much, मतलब ज़्यादा मत सोचिए क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, नहीं होगा. जस्ट कीप पॉजिटिव योरसेल्फ बिफोर द एग्जाम. एग्जाम में भी कंफर्टेबल रहिए. जैसा मैंने कहा, जो क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो पहले वो सॉल्व कीजिए. फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस लीजिए जो कंपटीशन में आप कर सकते हो. फिर थर्ड राउंड में टफ क्वेश्चंस लीजिए. इस तरीके से करिए. एज आई सेड, no need of feeling low or feeling negativity. Please try to overcome that. जैसा मैंने कहा, न्यू टॉपिक्स के बारे में मत सोचिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए. You just focus on positivity, right, and keeping yourself calm and composed. And ये आप बात में माइंड में हमेशा मत लाइए कि मैं भूल जा रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा. Nothing like that.
whatever you studied, you will remember it. I challenge you. आप एग्जाम में जब जाओगे तो सब आपको याद आ जाएगा. Don't have to worry about it. टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टेस्ट सीरीज लीजिए. टेस्ट सीरीज से टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस कीजिए. दैट विल बी more than sufficient enough. Okay, so boys and girls, very my best wishes to you for your forthcoming exam and your career. May God bless you all with a huge success in the exam, and then pay for the hard work which you have done, right, and your future endeavors, right. Good luck and best wishes again from my side. Thank you very much.